Hello, everyone, and welcome to another episode of Vimoh Live. This is a live stream slash podcast that happens on Wednesdays at 9:30 p.m. and Saturdays at 9:30 p.m. Today is Wednesday, October 12th, 2022, and it's exactly 9:30 p.m. and we are starting the show. If you're here on the YouTube channel, you are at youtube.com/Vimoh Live. This live stream is also on Twitch, twitch.tv/Vimoh Live. And if you are not live right now, you're probably listening to this as audio at a later point of time. And if you are doing that, you are using an app like Spotify, Google Podcast, Kana.com, Geo7, Apple Podcasts, etc. That's a whole new order. I don't know why I mess it up every time. But yeah, if you are doing that, if you are listening to the audio version of it, please leave a rating or a review of the show wherever possible. It helps the show find new audiences. The show has been growing steadily over the past year, and I'm happy about that. And I hope it continues to do so. You can support the show by clicking the join button below and becoming a member of the channel. I'm a full time content creator, and your support is what allows me to continue doing this. And we will be taking callers as usual. And hold on, let me just do away with the music. We will be taking callers. Let me share the link in the live chat. In order to do that, I will have to go to YouTube because I also have to pin it to the chat so that new people don't ask me where the link is. Before that, I will take a moment to read some comments from people who are already here. Hi, everyone. Puneet says, I got an opportunity to host an open mic poetry slash storytelling event, but my stage fright is too serious. How to deal with it? I used your tactic to just say yes, and now I have to go in any case. Event is this Sunday. You're already halfway there. You did not say no. That's half the battle. And if you did not say no, then I think the biggest challenge will come when you find yourself on stage next. When you find yourself on stage, you will get to the point where abhi kuch ho nahi sakta. I can either stand here and not do anything and be seen as a moron, or I can do my best. And when that level of resignation comes, I think you will do your best. So don't worry about it too much. You are already halfway there. You said yes, which is a huge thing. Uh, Click here to join via audio slash video. Click here to का spelling गलत लिखा हत्यानाश. Uh, right, the link to join via audio video is pinned, and sorry, it's pinned now. It's pinned. Anyone who wants to come join, you can join by clicking this link. Vitruvian man, thank you for becoming a member. Much appreciated. Uh, like this is the first member of today, Vitruvian man. Thank you for becoming a member. Really appreciate it. Thank you. Aziz says hello. Neil says hello. Game Pirate says hey guys. Vikas says hello Vimo भैया. I hope आप अच्छे होंगे. हाँ विकास मैं ठीक हूँ. Thank you for asking. I hope you're also okay. Battler says, have people looked at what is happening between Meta and Wire? I hope Wire is not being trapped and defrauded. I hope so too. And I will withhold the judgment until things become clear. Right now, it just seems to be a tug of war. I have zero trust in Meta. I have more trust in Wire. But it is also possible that, like, it is not necessarily the case that Wire is lying. It is also possible that Wire may be, as some people have suggested, being fooled. And if that is the case, we will find out in due course of time. Manmat says, Vimo, Pravesh Verma has not yet been arrested for his hate speech, your say. And he's not going to be. We talked about this in the last episode, I think. But no, not in the last episode. I spoke about this on Ghalib Kamal's live stream. By the way, I was on Ghalib Kamal's channel yesterday. So if anyone wants to see that, the video is on his English channel. You'll find a link in the community tab of this channel. Pravesh Sharma is not going to be arrested for the speech. Although the actual hate part of it was given by someone else, Pravesh Sharma's speech was mostly an appeal to economically boycott Muslims, which is hateful in its own way. But at least it was not genocide level. It was still quite bad. And I don't think he's going to be arrested because the goal of these people is to normalize this kind of behavior where these things happen and we're like, yahi to hota hai. This is normal. They are trying to redefine what is normal. And I think one great thing that happened is that opposition parties have spoken about this. The Congress at least had one press conference where Supriya Srinath spoke very stridently against this. And this is what needed to happen when the anti-CAA protests were happening. But we did not see much support from political parties. Glad it is happening now. And I hope that action will be taken.
Vikas says, is there any scientific reason why we fear to be on stage? Vikas, I already made a video about this. हमको stage पर डर क्यों लगता है? I think there is a reel in Hindi and also in English. Basically, it's the fear of rejection because from earliest times when human beings were tribal animals, what happened was that if our tribe rejected us, then we were pretty much dead because it was impossible for a human being to survive alone. We were not wild animals. So the fear of rejection by your fellow tribe mates, by your fellow tribe members, is very real. So when people are on stage, the greatest fear is that people don't go on stage. People don't put them on in a place where they will be rejected by other people. And when people go on stage, they experience nervousness because it feels like a life and death thing. That's evolutionary because it was an actual life and death thing back in the day. So that's why I think. Vitruvian Man says, thank you. Thank you, my friend. Dhurubai says, the wire said it's unlikely they're being fooled because they have known their multiple sources for a long time. Great. I have more trust in wire than I have in meta, by the way. So we shall see. Out of context, thank you for the 100 rupee super sticker. Much appreciated. Everyone else, if you don't want to become a member, you can simply send a super sticker. That also helps. Krishna says, sorry, I'm late. Krishna, it's okay. This is not a classroom. But let's get to people who are waiting to talk. First caller is Agnostic Arjun Arya. Hi, हाय। Triple A. अच्छा What's आपने up? अभी हाँ अच्छा है। वैसे अभी आपने रवि वर्मा जी के बारे में सुना है क्या? अभी जो किसके 22 बारे में? प्रतिज्ञा, रवि वर्मा जी हाँ, 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 22 बिल्कुल। प्रतिज्ञा जी, 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 22 जी। प्रतिज्ञाएं ली उन्होंने और हाँ, उनको क्या रहे मतलब उनको वो एक छोड़ना आम पड़ी। आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे जिनको आम आदमी पार्टी के अपने मिनिस्ट्रियल पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ा, पर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था एक मैसिव कन्वर्जन फ्रॉम हम्म, पीपल हू लेफ्ट हिंदुइज़्म एंड वेंट टू बुद्धिज़्म। पता है मुझे। हम्म। क्या क्या पूछना चाहते हैं उसके बारे में? तो उसको आप कैसे देखते हैं कि वो सही था या फिर ये कोई पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है, मतलब कोई पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर वो या उसको वास्तव में कास्ट सिस्टम से दूर करने का एक जरिया है वो। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ थी। ये कई लोगों को कास्ट सिस्टम की एट्रोसिटीज़ से बचाने की चीज़ थी और अगर ये पॉलिटिकल है भी तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। हम लोग किसी चीज़ को एपॉलिटिकल बोल नहीं सकते। हमारे समाज में जो भी हो रहा है वो सब कुछ पॉलिटिकल है। आप और मैं अभी जो बातें कर रहे हैं ये भी पॉलिटिकल है क्योंकि ये कुछ लोगों को सुनाई देगी और इन्फ्लुएंस करेगी। पॉलिटिकल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। हुँ, हाँ मतलब ये वैसे क्या है कि मतलब मैंने इसके बारे में फिर पढ़ना, अभी आज भी पढ़ा था थोड़ा सा कि हुँ। नियो बुद्धिज्म, मतलब नवयान है बेसिकली। नवयान के बारे में आप जानते हैं क्या? नवायन हाँ, नवायन बुद्धिज़्म या आई एम हाँ नॉट वही श्योर नियो बुद्धिज्म है। बट या हाँ। अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहिए। हाँ। तो नवयान जो बुद्धिज्म है इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो इसके बारे में ये लिखा था कि मतलब अंबेडकर जी के जाने के बाद इसका जो ट्रैक है वो लॉस्ट हो चुका है। जो गोल था जिसके लिए बनाया गया था वो जो लॉस्ट हो लोग चुका है। और बुद्धिज़्म मैंने में मतलब गए एक, हैं जो हाँ लोग बुद्धिज़्म में गए हैं, वो किस लिए गए हैं? हाँ वो सुपरस्टिशंस और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हुँ। डिस्क्रिमिनेशन वो भी एक सुपरस्टिशन ही है बेसिकली। नहीं, तो उसको, डिस्क्रिमिनेशन सुपरस्टिशन हमेशा डैमेजिंग नहीं होता। जैसे एक सड़क बिल्ली क्रॉस कर गई इसलिए मैं पार नहीं करूँगा, उससे किसी का डैमेज नहीं होता। पर कुछ सुपरस्टिशंस एक्चुअली डैमेजिंग होते हैं, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन और सुपरस्टिशन को एक कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। जो लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा है और बौद्ध हम्म धर्म को अपनाया है, वो इसलिए गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके खिलाफ, राइट? बुद्ध हम्म धर्म कितना भी बुरा हो, बुद्ध धर्म में 50 प्रॉब्लम हो, पर कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि उनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना? हम्म, बिल्कुल। किसी धर्म के बारे में मतलब मैं नास्तिक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई किसी का क्या धर्म है, ठीक है? और कुछ साल पहले तक मैं ये कहता था कि कन्वर्जन से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तुम्हारा क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। बट मुझे ये बताया गया कि जब कोई अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाता है, जैसे बुद्धिज़्म में जाता है, तो उनके सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव पड़ता है। इस धर्म में जिस धर्म में उनको इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जब वो किसी और धर्म में जाते हैं उनको उनको कहा जाता है कि तुम इंसान हो, तो उनके बहुत सारे उनके 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 मानस पर प्रभाव पड़ता है, उनके साइकी पे प्रभाव पड़ता है। और ये चीज़ें उन्होंने माइंड में रखी होंगी जब उन्होंने इस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की का डिसीज़न लिया। हम्म, बिल्कुल।
हाँ लेकिन मतलब वैसे मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मतलब मुझे लगता है कि ये एक अपने जो इसका जो गोल है, जो ट्रैक है, हो सकता है मतलब फायदा हुआ हो, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि और भी बेहतर तरीका था, ऑप्शंस थे जिस पर जैसे हम। कि हाँ जैसे मतलब आप बुद्धिज्म में जाने की जगह आप डायरेक्ट रैशनैलिटी की बात करिए, एथिज्म की बात करिए, मतलब एक फ्री भैया, थिंकिंग अगर हो। अगर अगर किसी सरकारी फॉर्म पे अपने आप को एथीस्ट डिक्लेयर किया जा सकता ना, तो मैं तो कर चुका होता। पर वो ऑप्शन नहीं है अभी। हाँ नहीं नहीं यू मतलब आइदर यू अगर आइदर आर। बनेगा आप। हमारे हाँ देश का सिस्टम हाँ। हिंदुइज्म के फेवर में इतना बायस्ड है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर कोई कैटेगरी, अगर कोई किसी और धर्म का मेंबर नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू बन जाता है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था या नहीं कहा था, आई एम नॉट श्योर, बट किसी ने कहा था। कई साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं है ठीक से। सो एक नेचुरल बहाव रहता है हिंदू धर्म के खिलाफ। इन लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम हिंदू नहीं हैं। दे सिंपली डिड नॉट से दैट वी आर नॉट हिंदू, दे सेड वी रिजेक्ट हिंदुइज़्म, वी रिजेक्ट द हम्म, हिंदू गॉड्स। सो हम्म, अगर वो लोग ये नहीं करते, तो उनका धर्म तो वैसे भी असिमिलेट हो रहा था हिंदू धर्म के अंदर। हिंदुओं में कितने हैं जो हम्म, कहते हैं कि बुद्ध तो विष्णु के ही अवतार थे। अपने आप को असिमिलेशन से बचाने के लिए ए उनको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, और बी ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि वी हम्म, लिटरली आर टेलिंग यू ओपनली वी आर नॉट हिंदू। वी आर बिकॉज़ इफ नॉट दे इन। डिड नॉट डू दैट, पीपल विल हाँ अस्यूम दैट इट्स हिंदू, हाँ हाँ, राइट? इस पर भी यार मतलब कुछ जो, वैसे ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी मतलब जो रैशनल जो मतलब मैंने एक्टिविस्ट मैंने थे, जैसे एक श्याम मानव जी है, मैं उनको हुँ, काफी देखता हूँ। हुँ। उनके बारे में जानते हैं क्या? महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उन्होंने अंधश्रद्धा हाँ, निर्मूलन ज पता है समिति मुझे। करके। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या तो उनके जब मैंने वीडियोस देखे नियो बुद्धिज्म में, क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क होता है, तो वो हुँ। बताते हैं कि मतलब नियो बुद्धिज्म भी फिर वही इतने ज्यादा अंधविश्वास अब उसमें आ चुके हैं, पूजा पाठ वो सब सारे अंधविश्वास आ चुके हैं, और एक्टिविस्ट भी क्या बन चुके नियो हैं। हिंदुइज़्म में हिंदू धर्म से ज़्यादा अंधविश्वास है? नियो हिंदुइज्म में नियो ये बुद्धिज़्म ज्यादा में कम या हिंदुइज़्म से ज़्यादा क्वांटिफिकेशन नहीं अंधविश्वास कर है? सकते। क्वांटिफिकेशन तो अब क्वांटिटी कैसे बता सकता हूँ, मतलब मैं आपको वही अंधविश्वास है चीज़ दोनों समझाने की जगह। कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप और मैं, जो कि हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, हम इस डिसीज़न को देखते हैं, तो हमें बस रैशनैलिटी दिखती है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाया है, उसमें रैशनैलिटी एक फैक्टर है। पर उन लोगों के लिए रैशनैलिटी एक फैक्टर नहीं था, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा फैक्टर था, डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए वो था। गए, राइट? हम्म हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ भी नहीं सकते। कोशिश कर हम्म, सकते हैं समझने की, पर द थिंग्स दैट दे हैव हम्म। गॉन थ्रू, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। लगता है मतलब एक तो वन टू वन वही बातचीत ही करना पड़ेगी, तो ही सिचुएशन को समझ पाएंगे मतलब। हाँ, अ, बस। हाँ एग्नोस्टिक तो अर्जुन आ रहे हैं, 5 और लोग वेट कर रहे हैं। आपके पास कोई और पॉइंट है तो जल्दी से हाँ, उसको बस बोल मैं ये दीजिए, उसके कहना बाद चाह मैं। रहा हूँ कि एक नियो बुद्धिस्ट से भी आप कभी लाइव में आइए, लाइए उनको भी, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी मतलब हम भी समझे कि क्या है, क्या ये कहना ओपन चाहते डिस्कशन स्लैश डिबेट होता है इस लाइव स्ट्रीम पे। अगर कोई आना चाहे और बात करना चाहे तो मैं डेफिनिटली कर लूँगा। हैं। हाँ ठीक है, चलिए बस इतना ही। ओके, कूल। थैंक यू। That was agnostic Arjun Arya. I have one, two, three, four, five people. I will take like there is Arbaz, there is Mithil, Neil, and Vitruvian Man, followed by some other people. इसी ऑर्डर में लूंगा, ठीक है? आई होप पीपल वेट। नेक्स्ट इज अरबाज। हाय अरबाज। हेलो हेलो। हेलो क्या वीवो, कैसे हो? क्या चल रहा है? गुड गुड, क्या चल ठीक। रहा है? मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जिसमें वो एक बंदा आया था, वो कॉन्शियसनेस को पता नहीं कहाँ से रिलेट कर रहा हाँ था। हाँ वो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मतलब न्यूरो साइंस वगैरह में कोई थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी हैं? आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत। तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास अब इनफ एविडेंस है कि हम ये बिलीव कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ब्रेन की प्रॉपर्टी है? 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं नहीं, अलाउंस सर्टेनिटी के करता साथ हूँ। हाँ, नहीं। जी, और इसीलिए। कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ, नहीं, नहीं कर सकते हैं। किडनी एक फिज़िकल ऑर्गन है, ये कह सकते हैं हम लोग, हाँ है ना? हाँ। राइट। सो ठीक। अगर न्यूरोसाइंटिस्ट में देखो, एक चीज़ तो ये भी है कि कई चीज़ों को हम लोग पूछ रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है? ये संभव है हम्म। कि कॉन्शियसनेस कुछ है ही नहीं, राइट? हाँ, वो इल्यूजन भी Maybe कहते हैं it कुछ। is it is a collective illusion that the human kind is going through. We think that it is something. For example, मुझे लगता है किसी नील डिग्रास टाइसन या किसी साइंटिस्ट ने एक बार एक स्टेज पे उल्लेख किया था कि एक प्लैनेट है, उसका एक ऑर्बिट है। हम लोग सोच रहे हम्म हैं वो ऐसे क्यों घूम रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि वो ऐसा घूम रहा है क्योंकि इस ऑर्बिट को पॉसिबल बनाने के लिए वहाँ पे एक और इनविजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए, जो हमको दिख नहीं रही है, पर होना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट नहीं तो घूम कैसे रहा है। बाद में पता हम्म। चलता है कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वो किसी और कारण से घूम रहा था,
right? So maybe ऐसे हो the thing सकता, that we are pointing at is not there. बट वो ये कहते हैं कि illusion इन द सेंस ऑफ, जिस तरह इट इज नॉट व्हाट इट सीम्स, लाइक उसका जो सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल वही होगा ना, जिस तरह न्यूरॉन्स ही सबस्ट्रेट होंगे, बट I वो, think so, yeah. हाँ, But again, सबस्ट्रेट it's तो a ये matter of, if it's a matter of certainty, until we have certainty, I will not say that I have certainty. मैं बस उनके यस, क्लेम्स को रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई कहता है कि इट्स नॉन फिजिकल, अरे वाह, तो ज़्यादातर लोगों ने तो अब तक कंक्लूजन में, मुझे सबसे ज़्यादा अजीब क्या लगता है पता है? क्वांटम फिजिसिस्ट्स बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, पक्का। न्यूरो साइंटिस्ट बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, पक्का। किसी चोमू ने 4 किताबें पढ़ ली और बोला मुझे स्पिरिचुअल, 100% पक्का पता चल गया है कि सब कुछ नॉन फिजिकल है। मुझे वो ज़्यादा अजीब लगता है। नॉन इतने फिजिकल श्योर कोई कैसे हो चीज तुम? डिफाइन कैसे करेंगे? क्या नॉन फिजिकल होता क्या? नॉन फिजिकल तो कुछ भी नहीं है, हाँ, कोई चीज ऐसी है ही नॉन नहीं जो फिजिकल्स अगर इममटेरियल बोलोगे हो। तो सिर्फ ब्रेन स्टेट्स हैं, थॉट्स हैं, जो कि एक बट फिजिकल उनका ऑब्जेक्ट की भी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, जिस तरह सॉफ्टवेयर होता है उसका भी अब सबस्ट्रेट तो फिजिकली होगा ना। अब ब्रेन स्टेट्स का भी मोस्ट ऑफ द न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उनका सबस्ट्रेट फिजिकल है, क्योंकि हमें इससे ऐसे पता लगा सकते हैं, पर अगर आप, मैं आपके अंदर कुछ इंजेक्ट करूं तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा। तो हुँ, इससे पता लगता है कि ये ब्रेन ही केमिकल न्यूरोकेमिस्ट्री वगैरह ये इसी चीज का बाय प्रोडक्ट होता है, जो भी हुँ, इमोशंस हो, थॉट्स हो। क्योंकि हुँ। ब्रेन लीजन अगर आपको हो जाए ना, एक वो शायद आपने पढ़ा हो, डबल स्लिट नहीं, वो तो क्वांटम फिजिक्स का ब्रेन स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हेमिस्फेयर को अलग कर देते थे। अलग कर वो देते हैं और उस, फिर भी काम हाँ, करता है। दो 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 कॉन्शियसनेस एक ही हाँ, इंसान में हो जाती हैं। हाँ। तो ये ये कैसे दो-दो ये, कॉन्शियसनेस एक इंसान में होती है, 2 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं। एक हम्म, न्यूरो साइंटिस्ट है वीएस रामचंद्रन, उन्होंने कहा था कि अगर जी एक जी, आदमी के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ हैं और एक पर्सनैलिटी भगवान को मानती है, तो क्या मरने के बाद उसका आधा दिमाग स्वर्ग जाएगा और आधा दिमाग नर्क हाँ, जाएगा? ये देखा था। और एक एक ब्लाइंड साइट का फिनोमेना भी होता है। उसमें होता क्या है कि जो आपका साइट को प्रोसेस करती है ना ब्रेन में, हाँ। कॉर्टिकल, वो अगर डैमेज हो जाए तो आप प्रोसेस नहीं कर पाते, पर आपको कुछ सिर्फ साइट उस जगह से प्रोसेस नहीं होती, और जगह से भी होती है। तो हुँ, आप मानोगे नहीं, कॉन्शियसली अवेयर नहीं होगे कि आपको अगर दिख रहा है, बट आप रैंडमली ना उस, आप, उन्होंने दिखाया था कि उनको ना एक जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे काफी हर्डल्स थे, तो वो हुँ। ऐसे जा रहे थे कि हर्डल्स हैं ही नहीं, बट वो कह रहे थे हमें कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा। या द ह्यूमन कॉन्शियसली ब्रेन इज अवेयर नहीं सी थे दिस इज साइट द के। काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। अगर तुम और मैं अभी किडनी के बारे में बात कर रहे होते तो इतने सारे मिस्ट्रीज नहीं होती, है ना? हम्म, हमें किडनी के बारे में सब कुछ पता है, पर ब्रेन के जी, बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको अभी नहीं पता है। हम आंसर्स ढूंढ रहे हम्म, हैं एंड उम्मीद है आंसर्स मिल जाएंगे। मिलेंगे बट मिलेंगे। अंटिल दैट हैपेंस, जब भी कोई आता है, कोई अजीबोगरीब क्लेम करता है, द बेस्ट अप्रोच इज सिंपली, डू यू हैव एविडेंस? इफ यू डोंट, व्हाई शुड आई टेक यू यस, सीरियसली? दैट्स इट। एनीवे, और अरबाज, एविड, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। नो नो, बस मैंने कॉन्शियसनेस भी बात करी, मुझे तो यही लगता है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बस, Yeah, same here. I agree एविडेंस with you. यही है। Yeah. ओके To ओके, to बाय। the best of our knowledge, that is what is true. यस When यस यस circumstances change, we will change our opinion. यस, Yeah. ओके, Chalo. Bye bye. बाय। Next is Mithil. Hi Mithil. Yeah, hi Vimoh. Can you hear What's me? up? Yes. Yeah, I'm great. So I found your channel via क्या उसका नाम? Science is Dope. I saw your segment. Okay. Hmm. It was great. So one thing that I found weird was you said Socrates was an atheist. I said So could you Socrates was like probably no. I said Socrates was called an atheist. yeah. Yeah. So yeah. So that part I found weird because Why? he He definitely was called wasn't. an atheist. People called him an Yeah, he atheist. was called. That was Yeah, not my but he opinion. wasn't. It is a fact that he was called an atheist. No, I'm only speaking about his own personal belief, not about I what don't know people what his were own personal calling him. beliefs was. I think very probably he had some soft corner for the pagan gods of his culture, but the Yeah. people around him called him a non-believer. That's what I was pointing out. His personal beliefs के बारे में मैं इतने surely कुछ बोल नहीं सकता because I don't Hmm. know what he was thinking. Yeah. उसके like yeah. Okay. I'm glad you cleared that up because I Hmm. thought you were asserting that he was an atheist, but you No, actually no. meant Listen to the that sentence I he. said. Listen to the Yeah. sentences I said carefully. I think a lot of people don't Yeah. get that. I do not speak carelessly. I try to avoid speaking carelessly. Yeah. At one point, I said someone was probably a deist, and people got fixated on the deist part and did not pay attention to the probably part. When I say probably, Yeah. it means we are not certain.
right? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Is that Okay. all? No. I guess that's all. But I don't know. Okay, Yeah, I think that's all for now. Yeah. cool. Thanks, Mithil. Do come Yeah. back whenever you have something more to add. Yes. Yes, I will. Thank you. Chalo, Thank you bye so much. bye. Next is Neil. Hi, Neil. Hello, Vimoh. I'm actually a huge admirer of what you do. I Thanks, man. recently discovered you through Meghnad's Eli 10 Okay. explain. So that's how I found you, and I actually You know what I stumbled keep across. thinking? I like people call Meghnad's podcast explain like I'm 10, and the short form is ELI 10. I think he could also have made it ELI egg, right? Then it would be Yeah, Alex. Such a cool name. yeah, yeah. A good observation. Yeah. Um, so actually, I had two questions to ask. Okay. So if I go on rambling after my first question, so please stop me because I really want to ask the second one as Sure, well. sure, sure. Sure. So my first question is that actually I am like a believer Hmm. in some sense, but uh, like I feel like religion does hold some does give people some kind of strength, right? Hmm. So is the problem like your entire channel is basically like helping us understand what is the problem with religion in society. Yeah. But if religion as a subject were to be kept to oneself Hmm. and not used to enforce a certain kind of behavior, like Yeah. there's this movie called Silence. I think Martin Scorsese directed one. Have you seen it? Which movie? Silence. Just Silence? Yeah, yeah, The Silence or something like that. No, I I'm don't not think sure. I've seen it. Yeah, so that movie is basically just shows that um, people can exist even if their faith is kept personal to them, Hmm. because their belief structure helps Hmm. them be a better human. They don't Not have to put always. why Not would you say always, that? right? Huh. Because some people believe that Huh. murdering people is what God wants them to do, right? Yeah, Some yeah, yeah, people yeah. believe that persecuting people is what God wants them to do. So it's not always something that makes you better. Yeah, that is true. Yeah. uh, Makes sense. See, I agree with you when you say, is your question over? Can I answer this one? Yeah, yeah, yeah. Yeah, you can go. So I agree with you when you say that religion can be a source of great personal comfort. There is no doubt about that. It can be, and it often is. But the point is, you can get comfort from A, B, C, and D, where D is religion. And if D is a thing that is not reliably always doing good to you, then you should probably Mm. not treat D as the only source of comfort, right? Yeah, Yeah, that's my yeah. point. Yeah, That's I try to be, I try to avoid being a dick to people. There are people who have lost loved ones. There are people who have Mm. suffered greatly in life. There are people who have nothing except their religion to keep them sane. I don't go to them and tell them there is no God, because that would be an asshole thing to do, right? Yeah. But when someone, you mentioned that religion makes people strong. Making someone strong can have so many meanings. Making someone strong means someone becomes more responsible, more kind, and uses their religious feeling to help people. That's great. But Mm. becoming strong can also mean that they become so fearless that they will go and become a suicide bomber, because Yeah. they think that is what God wants them to do. They will persecute people because that's what they think their culture, that is the power their culture has given them, right? So Mm. becoming strong sounds nice, but it's not always a good thing. Depends on what purpose the strength is being put to. No. Ye- Yeah, I do agree with that because all religious texts have been written by old men Yeah, thousands of years ago, and they had all skewed understanding of what the world actually, how the yeah, world actually works. So exactly. yeah, I kind of get what you're trying to say. What's your second So question? yes, so my second question is, do you follow the Soch YouTube channel by I Mohak watch, Mangal? not very regularly, but I watch some of their videos. Yeah, so recently Mohak Mangal made a tweet saying that um, Mohammed Zubair is not a fact checker Hmm. because he, on his Twitter platform, he Hmm. goes on to attack people from Op India and all those right-wing mouthpieces, right? Hmm. So my question is that how is that possible? Like just because you are fighting for yourself when Hmm. it comes to your own personal handle, how does that um,
take away from the fact that you No, of what course, you do is a, I disagree with that tweet, obviously. Mohammad Zubair does not stop being a fact checker just because he makes fun of someone on Twitter. We all do it. That's what Twitter is. It's for wasting time. it's for it's for making silly jokes and attacking people randomly. And I think Mohammad Zubair mostly like Op India deserves to be made fun of. I I can completely think of stand very with few people who you. deserve to be made fun of more than OP India, right? If Yeah. someone is, I consider all these right wing opinion portals to be agencies that are actively working against the interests of people of India. They're drawing attention away from important issues. They're praising, people who should not be praised. They're creating an atmosphere where persecution is possible, persecution of minorities is possible, and even encouraged. So I have no problem with Mohammed Zubair making fun of those people. Mohak Mangal is a well-known YouTuber. He does good work. He's entitled to his opinion. I don't agree with him. Yeah. Yeah. Yeah, thank you for that. Also, one thing I wanted to say to you is that please start a Discord channel, I have a Discord channel. Discord server. The link to Oh, that is is it there? yeah, yeah. Hold on. Let me just share the Discord link in chat. अरे कहाँ गया? मैंने Discord बंद कर दिया क्या? Hold on. If I've you been go to the going main through. page, if you go to the Yeah. main page of this channel, if you go to the main page of my main channel, youtube.com/Vimoh, Oh, you'll okay, find the okay, Discord link in the banner. You'll find the okay, Discord okay. link there. Yeah, I'll Cool? join the channel there. Okay, it was a Great. pleasure talking to you, Vimoh. Take Same care. here, man. Thank you. That was Neil, and I will take a moment to thank Out of Context for the 400 rupee super sticker. Much appreciated, sir. Much appreciated. Please continue doing this. People like me can do the work we do because of people like you. And finally, we get to our newest member of the channel, Vitruvian Man. Hi. Hey, Vimoh, Hi. am I pronouncing correct your name? Yes. Yes. You can call me Raja. That's not my Okay. real name. I have trouble remembering names if another name is on the screen. Okay. Go on. So I like to. I don't have any question from you, but I've been watching this. I'm curious to know who are all having a similar thought process of me, Hmm. right? Just watching so many videos on YouTube, and suddenly your channel pop up, and I have Hmm. watched some of your live stream and videos, and I thought of just want to speak to you. I'll Okay. speak to this channel instead of Okay. you, because many people are coming, and it has been many spaces, right? People not only atheist or religious, different belief Hmm. people coming here, and they are telling their view, correct, and you Hmm. answering. So I like to talk about my view. I don't have any question. Can I talk, or is it only the Sure. question I can? Sure. But I have a couple of people waiting. Maybe they have questions. So why don't you take 5 minutes and talk? Yeah, If I yeah. have any question, I'll interrupt you. Sure. Please stop me when I. Sure. Okay. So, I like to. I mean, I was curious about religion. I've been atheist for almost more than 10 years, Hmm. 15 years. Before Okay. that, I was born in a religious family, like everyone. Okay. Basically, this thought process, questioning everything, is moving under the enthusiasm on science and history. That critical thinking made me to the lose my religious faith. Okay. So overall, over the period, I'm still learning about. Initially, I was atheist. I call myself atheist, and I talk to my family and say that, hey, this God, everything is nonsense. Then I they don't listen to me, obviously, but Hmm. I now I kept quiet and watching them and really why they believe in something, and that kind of analysis, self research, I have been doing. And one thing I come to my point is the God is not central piece of the religion or any belief. Okay. Rather, the death is the central piece. The Hmm. human brain, it has a conceptual thinking it can make, and Hmm. it can create anything new. It is something different from the animal, right? Animal cannot look at a ruin and see how uh, how That we this know of. correct. And we know Like, we can to the best of our knowledge, animals can't do that. Maybe animals can, and we don't know about it.
we don't know and it doesn't have any conceptual thinking. It never exhibits. So that's how we know that No, it's that's not not true. Some concept level thinking has been observed in certain animals, most notably, uh, the ability to understand concepts and create new behaviors in response to stimuli has been noted in species of apes, dolphins, and whales have been known to have their own very tangible language that they use through whale song. That's true, but it is in still a primitive stage. For example, if you give us a puzzle to the animal, it try to solve it. Without the conceptual thinking, it cannot solve it, right? See, the problem with that is that we only have the human point of view to think of. We think of what we do as superior to what other animals do, but there may very well be internal lives that animals have that we have no access to, right? For example, the tallest buildings that we have made are Mhm. a few thousand meters, but ants can literally build structures that are tens of thousands of times taller than them. Yeah. Do you think They don't come. we plan it? We plan it, and we can imagine how tall it will be. All the Yeah, they answers, also plan it. all They almost also plan. how do they So make it without planning? I don't think the ants are planning. it is Yeah. it is doing is So based on yeah, a we don't know what goes on inside the ant's mind. We have some observations about ants that we can base our conclusions on, but we have been wrong before. So I would not be too confident. But that is beside the point. You were saying something. Go My on. point is, whatever it is not going beyond space and time. I can imagine something non-existence. I never seen something based on Yeah. the life I live it. I can make something new. I Yeah. can think a new future. That's how we are making movies and all comics and everything, right? Yeah. So that makes human to think about the reality in a different perspective, and human started to see the reality is Hmm. breaking, the reality Hmm. is dying. Correct. So everyone, you can see this the chaos of the nature, right? The second law of thermodynamics says that Yeah. the chaos Entropy. always increase entropy. So Yeah. human is, whether they have name it or not, but human is able to see everything is spoiling, and it is aging out, right? Yeah. Then he applied to himself. Including other humans who grow Other old and humans, die. yes, Yeah. yes. So then he applied to himself, and okay, I'm also aging out. So what is something which is not age out? That's the question. Then it came to human brain, right? Obviously, some everything is aging out means the That second is thought true. is it is not aging out. Yeah. So then he think that okay, something is supernatural or Brahma or Yeah. Almighty, I think whatever. It is not aging religion out. is to sum up what you're saying, religion is a product of fear. Humans live in a world where everything dies and they needed something to be eternal, so they created that thing and they called it God. They call it God, and the main thing is it is the need to create is associate that with himself or itself. I would say Yeah, yeah, yeah. We see our that. own nature reflected in the universe when we look at it. No, not like that. What I'm saying is the every god is telling how to reach it, right? It is not just a it's something exists and our life is die anyhow, right? That's not make any sense. Afterlife is the major question. Human never think I'm going to lose this reality Hmm. in a couple of years, right? That's not a very acceptable answer. The question already Hmm. came, and the religion is able to philosophy is going to give the answer, because philosophy or religion doesn't need to prove anything, right? So it is, Hmm. as long as you are convinced with the answer and it is giving some comfort, you are okay with Yeah. that. Yeah. So it is giving The the answer. trouble is it gives more than comfort, right? That's Sometimes it deludes you into false ways of false versions of reality. Sometimes it creates social unrest that causes you to be violent. If it was only about comfort and hope, I suppose that's okay. But if it hardly ever stops there, right? That's the problem. it is so if it is giving comfort and hope, which is not provable, and which is not um, which is not really, we cannot prove it. Obviously everything will come under, I mean, everything is, since God is there, all the Yeah. violence, everything is built up on top of it, right? Yeah. Yeah. Like if So someone says God is giving me comfort and hope and you say okay, then he yeah, says once right, once you so say along with comfort and hope he also gives me instructions to murder correct, you, and then you there's a, can't say okay. yeah, there's a many possibilities rises, right? God is Hmm. something different from your
humans moral, correct? The morality is it depends on clan to clan. It depends on every place to place I also. It think there depends are some on basics of moral behavior which are evolutionary in nature. For example, we don't kill each other because that breaks our uh, tribal structures. that morality is only personal, right? Even in animal kingdom also you can see certain moral behavior. In that case, Yeah, animals also yeah. have some So passion. that's what I'm saying. That kind of behavior is evolutionary in nature. It does not come from The religion. only thing is the morality is something which is different from the human, because human is our anything we are creative. That's create is as a social evolution. It's not just a Yeah, one single person evolution, right? yeah. So that's why the morality is different from a different clan and different places, because in their society the moral is different from other society. That is because the I morality don't is think. See, not. I think the word morality and morals in this context is used too loosely. Well, I think yesterday or day before yesterday we are talking about uh, morality with, I think, Battler in the comments. I define morality as something that exists in order to protect and maximize the welfare of people. If it does that, it is part of a moral code. If it doesn't, then it's just some random thing that has been added to the moral code. Like, you should wear red hats in this month of the year. If you don't, you're immoral. It has no bearing on morality. It's just a random practice that got added to it. So the differences in different cultures that you're talking about are local flavors that got added to it. They're not really part of a moral code in any way. They don't affect anyone morally anyway. Yeah, I sort of agree, but okay, I think we are speaking in a different Okay. So, language. I will wait. Vitruvian, I your will wait. 5 minutes are kind of up. I want to move on to the next person. Do you have anything to add? No, no, nothing. I can move on and later I can join. Cool, cool, cool. Thank you. Thank you. And thank you for becoming a member one more time. Yeah, welcome. Bye bye. Next is, wait, ये क्या हो गया? I think Ramjivan था, but then Ramjivan, hold on, I'll take Ramjivan. Yeah. There's Hello, Ramjivan, then there is Morani, then Abhishek, then Vikas. Yeah. Ramjivan, go on. हेलो, am I audible? Yes, you're audible. सर आपसे एक डाउट पूछना था। सर आप साइंस फिक्शन में रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि स्टार्टिंग किस चीज से करनी चाहिए, इंडियन ऑथर फॉरेन ऑथर्स की? इट डिपेंड्स आपको क्या पसंद है सर। पहले तो मुझे सर मत बोलो। दूसरा ये है कि साइंस फिक्शन रिकमेंडेशन देने से पहले मैं जानना चाहूँगा तुमको पढ़ना क्या अच्छा लगता है? रोबोट, साइंस फिक्शन, स्पेस, फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपिया क्या चाहिए? सर मैंने अभी अभी बीए पढ़ना चालू करा था, तो अभी हमारे सर हिंदी भाषा का वो हुँ, समझा रहे थे कि काल अच्छा। विभाजन की कैसे एसेज लिखे गए, कैसे पोएम्स लिखी गई, हुँ, कि जो पहले के एसेज लिखे जाते थे वो राजाओं के दरबारी लिखते थे, सही उनकी है। प्रशंसा करते थे। फिर बाद में हुँ, सोशल इश्यूज पे आए, नारी पे हाँ, आए, साइंस पे आए, रैशनैलिटी पे आए। तो मैं उस हाँ। टाइम पे देखता हूँ 1960s से 70s के बीच में हमारे यहाँ कास्टिज्म, नारी के ऊपर इन सारे छोटे-मोटे भूत-प्रेत इन सब पे ऐसे हुँ, स्टोरीज नॉवल हुँ, हुँ, बहुत हुँ, फेमस हो गए। हुँ। लेकिन वहीं वेस्ट में देखते हैं आइजैक इज़्माइल रोबोट्स पे लिख रहे हैं, एआई पे लिख रहे हैं, स्टार वॉर्स जैसी आपको चीजें बन रही हैं। भारतीय साइंस फिक्शन की रिकमेंडेशंस चाहिए? दोनों की चाहिए थी सर। आप सत्यजीत रे की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। सत्यजीत रे ने साइंस फिक्शन लिखी थी कई सारी। ब्योमकेश अगर आप सर्च करेंगे जी? ब्योमकेश ध्योमकेश प्रोफेसर के नाम। प्रोफेसर शंकु करके एक कैरेक्टर था हाँ, उनका, यस सर, उसके बारे में यस। लिखा था। जी। तो प्रोफेसर शंकु की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, काफ़ी बेसिक हैं एंड बट दे आर फन, देयर आर लॉट ऑफ फन। उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ और बंगाली राइटर्स ने भी साइंस फिक्शन लिखी थी, उसके हिंदी रूपांतर अवेलेबल हो सकते हैं। पर कुछ और माइंड में नहीं आ रहा। अगर वेस्टर्न चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जैसे आपके प्रोफेसर ने आपसे कहा ना कि उस समय के जो लेखक होते थे, वो जो पावरफुल कैटेगरी थी सोसाइटी, उनके बारे में लिखते थे, जी सर। राइट? सो कई साइंस फिक्शन राइटर्स जो विदेशी वेस्टर्न साइंस फिक्शन राइटर्स हैं, उनके राइटिंग में एक इश्यू ये होता है कि वो लोग जब भविष्य की कल्पना करते हैं ना, तो वो लोग जो काम करते हैं, उसको कहा जाता है व्हाइट फ्यूचरिज़्म। व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक टू अ व्हाइट पर्सन। आजकल कई ऐसे साइंस फिक्शन राइटर्स आ गए हैं जो कि एफ्रो फ्यूचरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं जैसे कि
भविष्य कैसा होगा एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, भविष्य कैसा होगा एक अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से, भविष्य कैसा होगा एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनको रिकमेंड करूँगा। और अगर उनके लेखन को आप पढ़ना चाहते हैं तो राइटर्स हैं एन के जेमिसन ओके सर। एंड एन के जेमिसन हैं, और एक और राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। वैसे इंडियन राइटर्स हैं, समित बासु हैं, मिमी मंडल है, इंद्रजीत बोलो, इंद्र प्रमित दास हैं, वंदना गुप्ता की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसका नाम है एम्बिग्विटी मशीन्स एंड अदर स्टोरीज, दैट्स इंडियन साइंस फिक्शन। और इसके अलावा एक राइटर हैं अचला उपेंद्रन, उनका लिखा पढ़ सकते हैं। गोलैंग्स करके एक ग्रुप है, उन्होंने एक एंथोलॉजी निकाली थी इंडियन साइंस फिक्शन की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों हैं, वॉल्यूम 2 इज बेटर। गोलैंग्स एंथोलॉजी ऑफ साउथ एशियन स्पेक्युलेटिव फिक्शन, आई थिंक इट इज कॉल्ड, उसको पढ़ सकते हो। विल दैट ओके डू? सर। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, हाँ। कार्ल जंग नाम के एक फिलोसफर थे, तो उनने एक बुक लिखी थी मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल। तो सर कार्ल वो यूंग। ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, ये सब लोगों ने बहुत रिलीजन का खिल्लियां उड़ा दी पूरे वेस्ट में जब यूरोप में रेनेसांस हुआ, लेकिन फिर भी एक आदमी के अंदर वॉइड रहता है जिसको ये पूजा पाखंड ये सब से भरा जाता है। इसका कोई आज तक साइंस ऑल्टरनेटिव सुझाव पाया है? इसका जवाब आपका पहला सवाल था जो आपके अंदर का वॉइड है ना, वो लिटरेचर भर सकता है। रिलीजन्स लिटरेचर ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये कहानियाँ बहुत पुरानी हैं और हम ये भूल गए हैं कि ये कहानियाँ हैं। अगर हम जो कहानियाँ आज पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है आने वाले 100 200 300 500 सालों में ये धर्म बन जाए, हो सकता है। रिलीजन्स जिस गैप को फिल अप करती है ना, वो गैप को लिटरेचर भरने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसे साइंस फिक्शन बुक्स हैं जो कि 10,000 साल तक चलने वाले युद्धों के बारे में है। ऐसे साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं जो कि एक रोबोट के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, जो कि 1 शताब्दी में बना था और 4 शताब्दियों तक ज़िंदा रहा और उसने देखा कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ़ अतीत में लिखी गई कहानियों के ऊपर क्यों टिके रहें? कार्ल यूंग ने जो लिखा वो साइकोलॉजी के बारे में था और उसको पढ़ना मैं रिकमेंड भी करता हूँ। पर कार्ल यूंग का पॉइंट ऑफ व्यू था। ऐसे और भी बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। मैं धर्म के रिजेक्शन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि धर्म पॉलिटिकल और पावरफुल हो जाता है। पर धर्म को पूरी तरह से वाइप आउट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और उनमें से एक ये है कि धर्म हमारे मन में किस प्रकार की चीज़ को फुलफ़िल करता है, और मेरे मत में उस चीज़ को लिटरेचर से भी फुलफ़िल किया जा सकता है। ओके सर। सर और एक ये था कि आप एक शॉर्ट वीडियो जो आपके पीछे बुक रैक है उसका एक बना सकते हैं और अपलोड कर शॉर्ट सकते क्यों हैं, सर, बहुत लॉन्ग बना है। फैसिनेटिंग। इस चैनल पे एपिसोड 54 पे जाओगे, थंबनेल पे एपिसोड ओके नंबर सर। होते हैं, एपिसोड 54 पे जाओगे, वो पूरा लाइव स्ट्रीम मैंने बस बुक्स के बारे में बात की है, ओ उसको देखना। थैंक यू सर। मैं कूल, देखूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो बाय बाय। बाय सर। Right, that was Ram Jeevan. Before I proceed any further, I would like to thank Milind for the 200 rupee super sticker. He says, though VFX quality is bad of Adipurush, but VFX is not the only criteria of many people criticizing it. They are complaining why attire of the characters is not like Ramanand Sagar Ramayana. क्या मजाक है। हाँ, मैंने रावण के ऊपर एक पूरा कॉमिक बुक सीरीज लिखा, एंड आई कैन से विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस दैट मुझे नहीं पता रावण कैसा दिखता था। ये लोग बड़े आ गए, सैफ अली खान को देख के लगता है रावण ऐसे नहीं दिखता था, तो कैसे दिखता था? We don't realize that the thing that we are protecting is not a millennia old epic, it's a 30-year-old TV serial. तुमने रावण का जो वर्जन उसमें देखा है वो भी किसी की कल्पना से ही निकला था। वो डिफॉल्ट कैसे हो गया? मैंने एक एक्टर का वीडियो देखा जिसको लगता है कि जस्ट बिकॉज ही प्लेड द रोल ऑफ लॉर्ड राम इन सम टीवी सीरियल, ही हैज नाउ द अथॉरिटी टू टेल एवरीवन कि रामायण कैसे बनानी चाहिए। क्यों? ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई और रामायण नहीं बना सकता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अजीब लोग हैं, क्या बताऊं। बट मिलन, थैंक यू फॉर द 200 रुपीज सुपर स्टिकर। मेसी, थैंक यू फॉर द 100 रुपीज सुपर स्टिकर, मच अप्रिशिएटेड। एंड होल्ड ऑन, ये कौन है? तरंगा है इधर। विकास, थैंक यू फॉर द 100 रुपीज सुपर स्टिकर, मच अप्रिशिएटेड। Taranga says, hello, I have a question. If you're taking questions, do you distinguish between theism and religion? Yes. Not all theists are religious, and not all religious people are theists, which is why
Whenever I talk to people, I ask them what exactly their position is, because one should not assume. It is impolite, and often people get frustrated with atheists because atheists seem to say, some atheists seem to say very wide widely applying things like sare religious people aise hote hain. You shouldn't do that. When someone says that I believe in God, you ask them, hey, what do you believe and why? You might find that they're not religious at all. They have some deistic idea of God. So that is the distinction I make. That was a nice question, Taranga. Thank you. Next on the screen is Morani. Hold on. Yep. Hello. Hello, Vimoh. How are you? Good, good. What's up? I've heard your talks with Galib the other day, and I really enjoyed it, man. That was a nice show. Thank you. That's why I came. I wasn't able to come online that day to say hi to you, so that's why I come today. And Hi. I have a few questions. Okay. What do you think about Mr. Dharav Ratri? Mr. Dhruv Rathi? Yes. Dhruv Rathi? I'm actually hearing my own voice back. Are you? Let me put you on. Yeah. So Dhruv Rathi is a liberal, and I think at least on one occasion he has called himself a Hindu atheist, a practicing Hindu atheist. It was a long time ago. I don't know if his opinions have changed. My opinions about the phrase Hindu atheist are kind of well known. There are 3 videos on my main channel about it if you want to watch it. But he's a liberal. He's an Indian liberal. He will not say things that are directly anti-religion or even challenging religion. Yeah. I don't know him personally, by the way. This guy is actually from Pakistan, but he's very popular in India. Who? I feel it. Okay, I'm going to ask you this first. His name is Arif Ajakia. Never heard of him. Never heard of it. Okay. Yeah. All right. Okay. Last question. I love how methodical you are. You took notes about everything. I always do. I always do. And I get out of your way, you know. What do you think about this African black parrot? Because I African heard black parrot. Yes, I heard you earlier saying something about dolphin and whales, and I think Oh no, I don't know about this particular creature. Okay, okay, okay. Supposed to be this most smarter creature, most smart. Smarter than humans? Well, in a way you can tell because human does stupid stuff, you know. Yeah, that gives me hope, because if an asteroid hits and we die out, I hope that creature survives. Of course. They will inherit the earth. Yes, yes, yes. So okay, I will leave you alone. It was nice talking to you, and I'm keep watching. And I don't have my other phone. And I mean, you know, you're the host. You say things. We all not can't say this anymore. And religion का जहाँ नाम आता है तो मैं तो गुस्से से पागल हो जाता हूँ. तो मैं तो बात ही तो मैं सपोर्ट करता हूँ. गालिब के चैनल पे, हारिस पे, अभी आपका है. 2-4 जगह जाता हूँ, मैं देखता हूँ. बट गाइस, आपने अगर विमो की और गालिब की पिछली स्ट्रीम नहीं देखी तो प्लीज जाके जरूर वॉच कीजिएगा, मजा आएगा. Bye guys. Thank you, Murali. Thank you. So the stream that he was talking about is the live stream on Galib's English channel. A link to it is in the community tab of this channel. You can go there, click through and watch it. It's 1 hour 40 minutes long. So make sure you have some time or you're doing something else and watch it in the background. It's like a podcast in which I also tell Galib to start a podcast. So there. Right. So the next person we take on is Abhishek. Hi, Abhishek. हेलो हेमो, हेलो. आई What's वांटेड up? टू कॉल यू सर यार, आप मना कर रहे हो नहीं लोगों नहीं को नहीं, सर सर मत बुलाने से. बोलो. पैर बोल लो यार, सर मत बोलो. नहीं, एटलीस्ट हम आप आचार्य थोड़ी बुला रहे हो, सर ही तो बुला रहे हो. आचार्य विमो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो आई वांटेड टू आस्क यू, एक मेरे को चीज जाननी थी आपसे कि where do you think our country is going as मतलब do you think that youngsters are becoming more scientifically minded with what is going on in the country? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाता, तो मैं एक बार आपसे आपका ओपिनियन, क्योंकि मेरा ओपिनियन थोड़ा पेसिमिस्टिक है. आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता था कि आप क्या सोचते हैं. मुझे लगता है कि at any given point of time, if you ask any 2 random people about where do you think the country is going, they will tell you it's going in a good place, and the other will say it's not going in a good place. So there is no actual answer to the question, because the country is far too complicated a thing and there are far too many variables.
and we can't really put our finger on exactly what the answer to that question is going to be. बट Are the एक youth क्वेश्चन becoming पूछना था। more are the youth हाँ। becoming more scientifically minded? I do not think so, because हम लोग अभी इंटरनेट अवेयरनेस के पहले स्टेज पे हैं, और इस स्टेज पे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन। और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि वो साइंटिफिकली लिटरेट हैं, बट दे डोंट नो जैक शिट अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग और द साइंटिफिक मेथड. So you will find people who are well educated, who are engineers, medical students, or even proper professionals in science, no less, who will say complete garbage as scientific when it is superstition. It is little more than superstition. So I don't think I want to say that our youth are becoming more scientifically literate, but I also don't want to say that our youth are a gone case and that no hope is to be found. So the answer is somewhere in the middle, I suppose. हाँ, अच्छा, ये तो हाँ, तो मैं इसलिए एक एक बात ये और पूछ रही थी कि I'm usually having conversation with my father, and my father usually the response that he gives me is कि this is not the first time that things are happening this crazy, you know, Hmm. कि अभी तुम थोड़े बड़े हुए हो and now you've become a bit aware of the things and you're thinking कि चीजें इतनी negative है. So do you think in the same way? कि am I just because I've become aware of the situations, that's why I think कि चीजें खराब है या हमेशा से थी? मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमेशा से थी। देर हाँ। आर बट चीज़ें हमेशा ख़राब रहती हैं, बट हमेशा हम्म। एक जैसी ख़राब नहीं होती। फॉर नहीं, एक एग्ज़ाम्पल, जैसी मतलब इन द सेंस कि जो like, रिलीजन you know, वगैरह there होता are some unique challenges right now which look है। really unmanageable to people like me, but to हम्म। someone like your father who has had more experience in life, maybe it looks like हाँ, इससे भी बड़े problems आए थे, आगे भी आएँगे. I have not gone through what he has gone through. So for you and me, this is the first हम्म। major hurdle in our lives, right? We are living in a state हाँ, of decaying democracy. Whether it goes completely decayed, time will tell. Whether it does एटलीस्ट दैट not, time वाज will नॉट tell. हैपनिंग बिफोर ना, मतलब पहले इतना तो नहीं हो रहा था No, ऐसा। no, no. I think it is. See, in the 90s, the internet was not there. So people are not aware of each other's despair. We were not informed a lot. But in the 90s, if you went around elections, you would have found a lot of booth capturing happening, complete elections stolen. It was fairly regularly in news. But the kind of challenges that the internet age has brought were हम्म। not there in the 90s. The kind of mass manipulation of sentiment in order to feed violence and bigotry was not around in the 90s. The 90s आई मीन had some problems, and they were a different kind of problem. Right now we have a different kind of problem. I Just because we got past what the 90s had does not mean we are going to get past what we have right now. And some problems have gotten worse since the 90s. Some problems have remained the same. It's just that we are only becoming, I, at least because of my privilege, I'm only becoming aware of it right now. Casteism has always been a problem. Caste based violence has always been a problem. But now, fortunately, we are getting to hear about it a lot, because the internet has brought that ability to people who are oppressed in order to say their side of the story. Okay, so let me ask you this कि because of the internet, is it कि अब मास लेवल पे जो लीडर्स हैं वो ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर पा रहे हैं यंगस्टर्स को कि या ऐसा है कि पहले भी हो रहा था और मुझे जस्ट अभी ज्यादा पता चल रहा है, मतलब आर I आर think it's यंग the first. I think it's the first option. Because of the या internet, people with bigoted views, people with, you know, dishonorable motivations are more able to perform what they want to do, are more able to affect the minds the way they want to do. However, whether or not this continues to be the thing, maybe at some point of time there is going to be fatigue about it. Maybe at some point of time people are going to become so aware of it. Like, you know, right now we are very like in America's past there was a period called the McCarthy era, where the Red Scare was a thing. कहाँ पे Everyone था laughs at मकार it. Everyone laughs at it मकार right now, दोबारा बोलना right? एक बार मकार्थी era क्या? मकार्थी era एक था, एक मकार्थी था जिसने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी अमेरिका में, जो कम्युनिस्ट्स को हंट कर रहा था, और ये कह रहा था कि रशिया के स्पाइस हर जगह फैले हुए हैं, तू रशियन स्पाई है, तू रशियन स्पाई है, जेल में डालो इसको, इस तरह की चीजें हो रही थी. उस दौरान लोगों को शायद पता नहीं था कि वो क्या था. हो सकता है आज जो बकवास हो रही है इसके बारे में आज से 20-30 साल बाद हम लोग देख के हंसें, राइट? हो सकता है कुछ लोग हंसे, इवन इफ यू एंड आई आर इनकेपेबल ऑफ लाफिंग अबाउट इट बिकॉज वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट. बट हो सकता है ये चीज़ आने वाले सालों में एक जोक बन जाए. हो सकता है लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाए
कि ये सब बकवास है और ये सब वी शुड नॉट सफर, वी शुड नॉट अलाउ मुझे टू मुझे हैपन? ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम साइंस में भी बहुत बेहतरीन तरीके से तरक्की करते जाएँ और एट द सेम टाइम जो मेरे जो आस-पास के जो दोस्त हैं, जैसे मैं उन्हें देखता हूँ, तो दे आर लाइक रियली इंटेलिजेंट व्हेन दे आर डूइंग मतलब जब वो पढ़ रहे होते हैं या कोई मतलब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, दे रियली मतलब समझ आ जाता है ना कि ये स्मार्ट बंदे हैं। लेकिन हुँ, जब वो बात करने लगते हैं रिलिजन के बारे में और जब हुँ। वो हिंदुत्व की बात आ जाती है, तो मुझे जस्ट समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया? मतलब सडनली उनका जो थॉट है वो एकदम से रुक क्यों जाता है? ब्लॉक क्यों आ जाता है कि दूसरे की तरफ वो सिम्पैथी या एम्पैथी क्यों नहीं दिख रही मेरे को? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो तो क्या पावर हम और साइंस प्रिविलेज के बारे में सर। अभिषेक, इसके बारे में एक लंबा आंसर दे सकता हूँ, पर ये लंबा आंसर मैं कल गालिब वाली स्ट्रीम में दे चुका हूँ। मैं देखता हूँ। उसको देख लो। इफ यू स्टिल हैव एनी हुँ, क्वेश्चंस, कम बैक नेक्स्ट टाइम एंड वी विल टॉक अबाउट इट। बट इन हाँ, हाँ। शॉर्ट, बिकॉज़ मैं ऐसे लटकाना नहीं चाहता लाइव स्ट्रीम में, इन शॉर्ट द आंसर वुड बी दैट इट इज़ नॉट अबाउट रैशनैलिटी और इंटेलिजेंस। हुँ, हुँ। Totally intelligent, normal, rational people are capable of doing really horrific things. जर्मनी में गधे नहीं भरे हुए थे। वो दे वर नहीं ऑल दे एजुकेटेड आर बट स्मार्ट बट पीपल, बट राइट? उनका थॉट मतलब सडनली इवन व्हेन आई एम टेलिंग देम थिंग्स की मतलब मेरे दोस्त है मैं उन तक वो बात पहुंचा सकता हूँ बट हर बात पहुंचा पाता हूँ ये बात नहीं पहुंचा पाता मतलब बात के एंड बिकॉज़ पे ऑफ द वो इमोशनल हिंदू ही हो मैनिपुलेशन, जाते हैं। राइट? इमोशनल मैनिपुलेशन चलता है एक बहुत बड़े स्केल पे। उस गालिब वाली स्ट्रीम को देख लो, ठीक है? उसपे उसमें इस बारे में मैंने बात की थी। कल हुआ था। कल हुआ था, हाँ। कम्युनिटी टैब पे लिंक है उसका, जाके देख लो वीडियो। ठीक सर थैंक ठीक यू है? थैंक चलो, बाय-बाय। यू बाय। Next is, hold on, let me take a look to see if, yeah. There is a member question from Vitruvian Man. The term atheist is relative. For Jews, Jesus was sort of an atheist. Yeah, the term atheist is relative. However, we are going by the modern definition of it. Milan says, Battler, Praveed Mohan is a clown. Actually, calling him a clown is a clown ka appan. Uh, Sutradhar says, I think digital tech reaching us before us is getting decently enlightened in a French Revolution sense will work against us. Internet will prove fatal for our democracy, I think. Uh, that seems to be the consensus right now. However, I think it is possible for things to change. And with that, I go over to Vikas. Hi, Vikas. हेलो हेलो भैया, Hello. कैसे हो आप? अच्छा, बताओ. जी, तो मैं आज आपके लाइव स्ट्रीम में इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ मैं जब से मैं एक आई मीन एथियस्ट बना हूं ना, तो एथियस्ट मैं बोलना सही नहीं है, एथियस्ट बोल सकते हैं कि मैं एक रैशनल इंसान बना हूं। मैं Okay. साइंटिफिकली जब से अवेयर हुआ हूं तो मेरे बिहेवियर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही है या नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है या थोड़ा नेगेटिव है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपसे कंफर्मेशन के लिए आया हूँ। अच्छा. लाइक जैसे कि मैं जब से मैं दुनिया को एक विज्ञान के नज़र से देखना स्टार्ट किया हूँ, लाइक जैसे क्या बताऊँ मैं, लाइक जीवन को, प्रकृति को, सृष्टि को, लोगों को, मतलब ह्यूमन सोसाइटी को, तो मेरे अंदर इस तरह के चेंजेस आए ना, लाइक कुछ चेंजेस ऐसे हो गए कि मैं अपने अब फैमिली से उतना पहले की तरह इंटरेक्शन नहीं करता हूँ उतना। आई मीन मैं कुछ क्या बताऊँ, थोड़ा खोया-खोया सा रहने लगा हूँ मैं। अच्छा. पर ज़्यादा टाइम में ये रैशनैलिटी की वजह से है, ये कैसे पता चला? रैशनैलिटी की वजह से नहीं, मतलब जैसे कि मैं ज़्यादा मेरा जो टाइम है वो ज़्यादातर सोचने में जाता है। चीज़ों को सोचने में, समझने में, वर्ल्ड को समझने में। लाइक एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई समझ गया। साइंटिस्ट। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये साइंस के बारे में सोचना फैमिली के टाइम के रास्ते में क्यों आ रहा है? हाँ, बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैं ऐसे वैसा नहीं था, तो मैं ज़्यादा टाइम अपने फैमिली से आई मीन उसके साथ रहता था, उनसे बातें करता था और फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर कुछ भी हमारे हमारे लोकल एरिया पे कोई भी अगर फेस्टिवल होता था, तो मैं इसमें हुँ, पार्टिसिपेट करता था। अब क्या अच्छा। हुआ कि मैं उन सभी से दूर हो गया हूँ। इसलिए दूर नहीं हुआ कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए दूर हो गया हूँ कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो हुँ, खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे पता है अच्छा। कि रियलिटी है। तो कहीं न कहीं ठीक है, मैं इंटरेस्ट क्यों खत्म हुआ मुझे पता है उसका रीज़न। लेकिन इससे एक तरफ ये भी हो रहा है ना कि मैं लोगों से मिलना-जुलना काफ़ी मेरा कम हो गया है। लोग भी, मेरे हुँ, फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि भाई तू अब उतना, मतलब हम लोग से उतना इंटरेक्शन क्यों नहीं करता?
मैं कोई भी अगर फेस्टिवल वगैरह होती है, भले वो रिलीजियस फेस्टिवल हो, तो मैं उसमें उतना गॉट इट। पार्टिसिपेट नहीं ओके करता। ठीक है विकास, तुम्हारा पॉइंट समझ गया है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ये मेरा जो बिहेवियर में चेंजेस आया है, तो क्या ये सही मेरे लिए सही है या नहीं? वो मैं तुमको नहीं बता सकता, तुम्हारा लाइफ है। अगर ओवरऑल तुम्हारे बिहेवियर में डेट्रीमेंटल चेंजेस हैं, आई माय क्वेश्चन टू यू वुड बी दिस, आर यू मोर क्रूअल? बिल्कुल नहीं। आर यू ये ऐसा impolite? ऐसा Are you impolite to people? नो, Are you rude to people? और ज़्यादा हम्बल हो गया हूँ। हाँ बस, तो फिर आई थिंक दिस अ नेट पॉजिटिव। इफ योर फैमिली इज योर फैमिली कंप्लेनिंग दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, हाँ, कंप्लेन तो उन्होंने किया है कि तुम अब हम से उतना बात नहीं करते हो। तो पता इट नहीं माइट बी अ मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नहीं, थोड़ा टाइम निकाल लो हर रोज उनके साथ स्पेंड करने के लिए। यू कैन ऑल्सो टेल देम कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, इसलिए मेरा टाइम बहुत उसमें जा रहा है, बट इसके अलावा और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही। बट अगेन, मैं तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के बीच का डायनामिक नहीं जानता हूँ। मे बी देयर इज मोर ओके। दैट यू कुड डू। मैं तुम्हारी फैमिली, ये पहले भी तुमको बता चुका हूँ, वैसे फैमिली इश्यूज के बारे में इंटरनेट पे किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जो कि तुम्हारे परिवार को नहीं जानता इज नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। जी, जी, वो आपसे मैंने सीखा है, तो मैं ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं अपने मुझे खुद से उसको मैनेज करना होगा। एक और बात ये है ना कि पता नहीं मैं क्या बताऊँ, थोड़ा-सा मैं स्पिरिचुअल टाइप का हो गया हूँ। लाइक अब स्पिरिचुअल बोलना सही हुआ कि नहीं, मैं मैं क हो सकता है कई लोग तो मुझे बोलने लगे कि मैं वियर्ड सा हो गया हूँ कुछ। अच्छा, वियर्ड पता मतलब नहीं क्या इस बोलते हैं एग्जैक्टली? मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करना स्टार्ट कर दिया हूँ। लाइक जब से मैंने जीवन को जाना है कि लाइक मैं बताना चाहूँगा, जैसे जब से मैंने विज्ञान के ज़रिए खुद को देखना स्टार्ट किया, लाइफ को देखना स्टार्ट किया, लाइक मैं शॉक्ड हूँ अभी तक। होल्ड ऑन टी, यू वांट टू कम ऑन स्क्रीन एंड टॉक टू हिम? इफ यू वांट टू, यू आर मोस्ट वेलकम। कौन? हाँ बोलो विकास। जी, तो मैं बोल रहा हूँ, जब से मैंने मतलब मुझे ये पता चला है कि वी आर मतलब हम लोग एक मतलब लाइफ का कोई मकसद नहीं है, होता ना कि वही निहिलिज्म वाला फीलिंग। नहीं वैसा थोड़ी है, तो लाइक यू नो लाइफ का मकसद वही है जो तुम डिसाइड करोगे इसका मकसद है, हाँ, तो बस। वो ठीक है, लाइफ बट का कोई हम इनहेरेंट मकसद नहीं है, बट यू कैन क्रिएट अ मकसद फॉर योर लाइफ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब एक होता ना कि खुद में हमारा एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा निराशा, मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना, कि अगेन, एक वंडर भी होता है और एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। एग्जिस्टेंस का इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, पर तुम्हारे एग्जिस्टेंस का क्या वैल्यू है ये तुम डिसाइड कर सकते हो। ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, तुम इस ब्रह्मांड में हो, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, उस टाइम में क्या करना है ये तुम डिसाइड कर सकते हो। ऊपर से कोई मैनुअल लेके नहीं आया कि तुम्हारा पर्पस ये है। दैट इज द ओनली पॉइंट। हाँ, तो और इसके वजह से क्या हुआ ना कि जब भी मैं अगर कुछ भी गलत होता है ना वर्ल्ड में, तो थोड़ा-सा भी कुछ होता है तो मैं बहुत ज़्यादा पहले पहले मेरा ऐसा कोई भी मतलब फीलिंग था ही नहीं। अब जो है ना कि मैं कुछ भी गलत देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा आई मीन निराश हो जाता हूँ। अच्छा, लाइक अगर मैं रास्ते में भी उसका चलता हूँ मतलब तो है मैं तुम अगर नाइलिस्टिक नहीं हुए हो। इफ यू आर हैविंग एन इमोशनल रिएक्शन टू द वर्ल्ड, मतलब तुम इमोशनली मतलब जो डिस्कनेक्टेड होने की बात कर रहे थे वो नहीं हुए हो, है ना? अच्छा, लाइक अगर देखिए यूक्रेन मुझे में जो लगता है अटैक कि तुम हुआ है। कंफ्यूज्ड हो इस समय, और तुम्हें इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए थोड़ा बहुत आत्म मंथन करना पड़ेगा। और इसमें हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, हो सकता है ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं तुमको पर्सनली नहीं जानता हूँ। सो यू शुड टॉक टू पीपल हु आर क्लोज टू यू इन योर लाइफ एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर टू दिस। जी, जी, ये भी सही बात है। लेकिन मुझे इससे कुछ ये मुझे ये पता चला है कि शायद शायद जो साइंटिस्ट वगैरह होते होंगे, उन्हें भी कहीं न कहीं इस तरह की फीलिंग होती होगी। और इससे ही मुझे पता चल रहा है कि अब मुझे शायद इसका कारण पता चल रहा है कि क्यों रिलीजियस लोग इतना डरते हैं अपने रिलीजन को छोड़ने में। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि सभी को इस तरह की फीलिंग पसंद नहीं है, जैसे पर ये जो फील हो परमानेंट रहा नहीं है। होगा, ये परमानेंट नहीं होगा। कई लोग जब जो कि रिलीजन में काफ़ी डूबे होते हैं, जब निकलते हैं अचानक से, तो उनको जी। लगता है ओह माय गॉड मेरे पास कुछ पकड़ने को नहीं है और मैं गिर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, पर थोड़ा बिल्कुल। टाइम बीतने के बाद होल्ड बन जाते हैं। मेरे साथ भी सेम हुआ था ना, लाइक मैं सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं उसमें एक्चुअली में 2 बार मैं फेल कर गया उसमें। तो अच्छा। थर्ड टाइम में जब मैं एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे पास करना है, क्योंकि मैं कोई हाई बैकग्राउंड से तो आता नहीं हूँ, मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो हुँ, उस एग्ज़ाम्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो हुँ, जब मैं उस पे थर्ड टाइम क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आने का था, तो उस समय काफ़ी मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी।
मैं लिटरली मैं घर पे मतलब मैं कमरा रूम को बंद करके मैं काफी रोया और मैंने भगवान के सामने मतलब मैंने काफी हाथ पैर जोड़े। मैंने बोला कि भगवान आप मुझे पास कर दो, मैं आपको कुछ भी दूंगा। मैं एक तरह से मैं ब्राइब देने की कोशिश कर रहा था जो भी। तो मैंने करीबन आप यकीन नहीं कीजिएगा मैंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा मैंने ऐसा किया। उसके बाद वो रिजल्ट आने का टाइम था, तो रिजल्ट जब पब्लिश हुआ तो जो होना था वही हुआ, मैं फेल हो गया। अच्छा अच्छा तो उस समय मेरे सर पे बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर पड़ा कि यार क्या मतलब मैं इतना मैंने रोया, भगवान को दया नहीं आया कि मुझे पास कर देता। तो उस समय मेरा ना वो रैशनल माइंड मेरा ओपन हुआ कि यार इतना भगवान इतना क्रूएल कैसे हो सकता है कि एक बच्चा रो रहा है, अरे पास कर दो, 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा जो भी हो। लेकिन हुआ नहीं। तो तब उसके बाद मैंने धीरे धीरे इंटरनेट का भी वो आई मीन 2016-17 की बात है, तो फिर इंटरनेट भी तो आ गया था अच्छा खासा, तो मैंने काफ़ी चीज़ें वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो आप जैसे काफ़ी लोग मिले मुझे, तो फिर मुझे वो जो मेरा जो मन का जो डाउट था मेरा कि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ऐसा कुछ है नहीं यार, मतलब कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं है, कोई ऐसा कोई बीइंग नहीं है जो आपको सुनता होगा, आपकी हेल्प का सिर्फ आप ही कर सकते हो। इस टाइप का जो फीलिंग है जो काफ़ी डरावना सा लगता है एक तरह से, तो वो कंफर्म हो गया है ना। तो ठीक उसके है। बाद विकास मेरे पास अभी 5 और लोग हैं जिनमें से मैं सबसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। इज ओके इट ओके ओके सर। इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन? हाँ हाँ विमो, कोई कोई बात नहीं, Cool. थैंक यू सो मच। Thank you. Bye bye. So I have now. Uh, mm, so people who have come back for the second time, please come back next episode because I don't think I will have time to take you on. I will take on Madhusudan and Cinephile and Akash. उसके बाद और कोई जितने भी लोग हैं सब लोग अभी क्यू को लीव कर दो बिकॉज आई विल एंड द लाइव स्ट्रीम आफ्टर दीज 3 पीपल, मधुसूदन, सिनेफाइल एंड आकाश, और उसके बाद विल जस्ट आज का आज का कोटा खत्म हो जाएगा। कूल। सो लेट मी टेक ऑन मधुसूदन। हाय मधुसूदन। हेलो सर। हेलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि आप सच में ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम जैसों के लिए। और मैंने आपको चैनल का जनरली फॉलो किया है और मतलब बहुत से वीडियो देखे हैं और आपकी वजह से एक अलग तरीके का मेरा माइंड डेवलप हुआ है। एक्चुअल में आजकल ना फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और जैसे इन सारी चीजों की जो माइंड से रिलेटेड चीजें हैं उनकी जनरली मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ। और पहले से ये मेरा माने कि कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड था। तो बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल फिलोसॉफीज है जो बहुत कंफ्यूज करती है। उसमें से सबसे कंफ्यूजिंग जो मुझे अभी तक लगी है वो है सोलिप्सिज्म की फिलोसॉफी, कि सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत ही डरावनी लगती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है। और इसके बारे में मैंने जब इंटरनेट के ऊपर खोजा, जो इस टाइप की इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी वाली जो चीजें, वो चीजें वेदांत में भी पाई जाती है सर। जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत। और जनरली सर आप आचार्य प्रशांत को तो जानते ही होंगे। 2 एपिसोड पहले कोई आया था जिसने अद्वैत वेदांत के बारे में बात करने की कोशिश की थी और वो बातचीत अच्छी खासी हुई थी। उसका एक क्लिप भी है ऑन द मेन पेज ऑफ दिस चैनल। अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ा नीचे लाइव स्ट्रीम हाइलाइट्स में एक थंबनेल दिखेगा जिसके ऊपर अद्वैत वेदांत लिखा हुआ है, उसके वो देख सकते हैं। उसमें उसके बारे में डिटेल में बातचीत है। इस टॉपिक के अलावा कुछ और पॉइंट है क्या? हाँ, टॉपिक के अलावा तो बहुत सारे पॉइंट है सर, लेकिन सच में ये जो चीजें है ना ये कंफ्यूजिंग कर देती है। एक इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार कर देती है कि कोई चीज है सिर्फ मैं मानता हूँ इसलिए है, और ये बाकी चीजें जितने भी है वो कैसे वैसे वो उसका आंसर मिल ही जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ये जो चीज है कि हेलो मधुसूदन, अजीब है, जिसे प्रूव करना थोड़ा सा अजीब लगता है। और इमेजिनेशन की दुनिया में हम चले जाते हैं अपना यूनिवर्स में, फिर हम डिसीजन को अफेक्ट करती है वो चीज। तो ये थोड़ी इसका पता है सॉल्यूशन क्या है? अलग सी लगती है। तो सोलिप्सिज्म पता है क्या होगा? सोलिप्सिज्म से बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ और ये लाइव स्ट्रीम और आप और जितने भी लोग जिनको मैं जानता हूँ और सब कुछ सिर्फ मेरे मन के अंदर हो रहा है, तो मेरे पास इसको गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है? पर अगर ये सच है तो उसको सच मानने का भी मेरे पास कोई तरीका नहीं है। राइट? हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अगर सोलिप्सिज्म है तो आप मेरे इमेजिनेशन का हिस्सा हैं।
और मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस, बिकॉज आप और मैं दूसरी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। हो सकता है आप एक कार्ड निकालें और बोले कि इस कार्ड पे कौन सा नंबर लिखा है, मुझे बताओ, हाँ और मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। सो इन दैट केस दैट इज प्रूफ दैट यू आर अ पर्सन विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दैट आई डोंट हैव, which means that you and I are different people, right? हम्म पर अगर वो जो इल्यूजन है कि सब कुछ मेरे मन के अंदर चल रहा है, आपने कार्ड पकड़ा हुआ है वगैरह वगैरह सब कुछ, तो उसको डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। हार्ड सोलिप्सिज्म जो है, उसको डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, पर उसको प्रूव करने का भी कोई तरीका नहीं है। हम्म ठीक वैसे ही जैसे कि अगर कोई कहे कि रियलिटी क्या है जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमारे पास बस पीयर रिव्यू है। आप और मैं किसी चीज़ को देखकर अपने नोट्स कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू, दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल, but whether they are true depends on evidence, and I don't know what evidence there can be against or for solipsism. It is completely unfalsifiable, right? या That is the point. सो इसका कोई उपाय नहीं है, ये अल्टीमेट जो नहीं, चीज है कि ये सोलिप्सिज्म क्या, सोलिप्सिज्म सच है या नहीं है, इसको जानने का कोई तरीका नहीं है। अगर सोलिप्सिज्म सच है और सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर हो रहा है, तो उसको डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। और अगर सोलिप्सिज्म झूठ है, तो भी उसको प्रूव करने का या डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। सो इट्स इसका मतलब ये इट्स कंप्लीटली यूजलेस। इसका मतलब ये है कि मेरे जाने के बाद या मेरे मरने के बाद भी ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि उसका क्या काम, उसको प्रमाणित करने वाला कौन है, उसका साक्षी कौन है। हाँ, यही तो अद्वैत वेदांत का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि दुनिया मतलब एक ही कॉन्शियसनेस है, पूरा ब्रह्मांड एक कॉन्शियसनेस है। और ये जो फिगमेंट्स, जैसे अगर आप सपना देखते हैं, तो आपके दिमाग के हाँ अंदर जितने भी लोग होते हैं, वो सब आपसे डिसएग्री करते हैं, आपसे लड़ते हैं, पर अलग-अलग लोग होते हैं, पर वो असल में आप ही के इमेजिनेशन के मैनिफेस्टेशंस होती हैं। हाँ, जैसे कि वो इंसेप्शन में दिखाया गया, मूवी इंसेप्शन एग्ज़ैक्टली। में। इंसेप्शन में नहीं, वैसा नहीं था। इंसेप्शन में मल्टीपल कॉन्शियसनेसेस एक कॉन्शियसनेस के अंदर थी, बट इंसेप्शन एक साइंस फिक्शन पिक्चर है। मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। अद्वैत हाँ वेदांत में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इफ अगर आप इसको अपने लॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाएँगे, यू विल एंड अप एट सोलिप्सिज्म, एंड देयर इज़ नो वे टू गेट आउट ऑफ इट। सो यू माइट एज़ वेल नॉट वरी अबाउट इट, राइट? क्योंकि अगर आप मान लेंगे कि सब कुछ तो मेरे मन के अंदर हो रहा है ना, तो आप कोई भी चीज़ करने की कोशिश छोड़ देंगे। आप समाज में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या सब तो मेरे मन के अंदर हो रहा है। आप अपने परिवार से प्यार करना छोड़ देंगे, क्यों करूँ? ये तो सब मेरे मन के, मेरे फिगमेंट्स ऑफ माय इमेजिनेशन है। आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल, दिस इज़ प्रोबेबली आल्सो अ क्रैश एग्जांपल, बट सोलिप्सिज्म के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ मैं हूँ और बट कुछ दैट नहीं है, कंसेप्ट मेक्स अस वेरी कंफ्यूज्ड। या इट इज़ डिज़ाइन्ड टू बी कन्फ्यूजिंग। अगर आप धार्मिक गुरुओं की बातों में आ गए, तो आप पैसे डोनेट करेंगे उनको, और तब वो नहीं बताएँगे कि अरे ये पैसा तो सब मेरे दिमाग के अंदर है। वो खुशी-खुशी ले लेंगे आपके पैसे। या हुँ, सो अनदर क्वेश्चन सर, ये माइंड ड्यूअलिज्म जो हम कहते हैं, इसकी हुँ। वजह से कॉन्शियसनेस आती है कि जो हम सुपर कॉन्शियसनेस या मेन कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर किसी के अंदर माइंड ड्यूअलिज्म नहीं है, तो अभी एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा है, जैसे माइंड छोटे ड्यूअलिज़्म बच्चे को होते हैं वो कर रहे माइंड होते हैं। ड्यूअलिज़्म माइंड ड्यूअलिज़्म का डेफिनिशन बताओ? जैसे कि हमारे मन में दो माइंड तैयार हो जाते हैं, ये वो 50-50 तरीके से एक दूसरे से टक्कर लेते हैं या जैसे आर्गुमेंट करते हैं। तो इसी वजह से हम एक सुपर कॉन्शियसनेस हम खुद को देख पाते हैं कि हम भी एक कॉन्शियस है। अदरवाइज कॉन्शियसनेस इज नथिंग, इट इज जस्ट क्रिएटेड थिंग बाय माइंड ड्यूअलिज्म, एंड बियॉन्ड माइंड ड्यूअलिज्म देयर इज अ सुपर इंटेलिजेंस। हाउ डू यू नो दैट? No, this is just my hypothesis, or I can say this might be or maybe, because How do you know I it am a may be? Maybe. thinking very deeply and exploring, experimenting. This is my serious. सी माय पॉइंट इज़ दिस, अगर आप ऐसा कोई क्लेम कर रहे हैं जिसको साबित करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं या कोई भी क्यों मानेगा उसको? है ना? मानने की बात नहीं, आप क्या
आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? मुझे यही लगता है कि आपने एक क्लेम किया और इसको साबित करने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि मैं भी 50 क्लेम कर सकता हूँ। देयर आर इनविजिबल हिप्पोपोटामसेस लिविंग ऑन एवरी ट्री एंड दे आर सीक्रेटली कंट्रोलिंग आवर माइंड। कैन यू डिस्प्रूव इट? Totally imagination. Exactly. So similarly, I can say the same about the theory that the hypothesis that you brought up. बिकॉज़ उसको साबित करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि हर दुनिया के हर पेड़ के ऊपर एक अदृश्य हिप्पोपोटामस है, जो कि टेलीपैथिकली हर इंसान को कंट्रोल कर रहा है, इसको डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। हम्म ठीक वैसे ही जो चीज़ आप कह रहे हैं, एक सुपर कॉस्मिक जो भी बीइंग है, उसको प्रूव करने का या डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि No, हमारे no, पास no. इसका I'm not. I was not talking of super conscious like a God and that thing. Just मैं ये कह रहा था कि जो हमारी रियल इंटेलिजेंस आती है, एक ह्यूमन रियल इंटेलिजेंस, जैसे हम I कहते don't हैं know कि ये what that व्यक्ति means. सच में What does that mean? a person's intelligent. When we say you are intelligent, that person is not intelligent. So Hmm. I mean to say that mind dualism is a main factor that creates real intelligence in a person. I don't know what that even means. Like, are you using a neuroscience का term? Mind dualism? No, 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 no. Are you talking about mind-body dualism? Yeah, it may be like Mind-body mind dualism dualism. is just I don't think mind. mind-body dualism का intelligence के साथ वैसा कोई direct सरोकार है. I think you might be getting confused there. Hello? Yeah, Yeah. yeah, Maybe sir. आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए। आप अगली बार आइए इस बारे में बात करने के लिए, पर नोट्स लेके आइए। लिख के लाइए आपको क्या बोलना है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ हाँ थोड़ा हाँ, सर्कुलर जरूर रीजनिंग हो जरूर, रहा है। मैं पूरे के पूरे नोट्स लिखकर, हाँ, जी, पूरे के पूरे बिल्कुल। नोट्स लिख रहा हूँ इसके ऊपर। मैं बहुत 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 काम कर रहा हूँ, और मैं अभी 20 ईयर का स्टूडेंट हूँ, मतलब 20 ईयर मेरी एज है, और अच्छा, ये मेरा फील्ड क्या रहा है, पढ़ते हैं आप? क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप मैं क्या अभी पढ़ते हैं? बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, अच्छा, बीकॉम बीकॉम करते हैं। बैचलर ओके, ऑफ कॉमर्स, ओके, और फाइनल ईयर में हूँ। और ओके। मेरा मानना यह है कि माइंड ही सब कुछ है, उसी में डर है, उसी में सब कुछ है। तो यही चीज मुझे आगे तक ले जाती है कि हम मान ले किसी चीज को तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। माइंड में इमोशंस हैं और इमेजिनेशन है, पर बाकी चीजें नहीं हाँ है। वही, बाकी चीजें माइंड के बाहर हैं। हाँ, पत्थर, लेकिन सर मैं एस्टेरॉइड, कुछ हाँ, हिप्पोपोटामस वो आपके माइंड में नहीं है। आपके ये चैनल के लिए, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, मतलब कि आप जैसा चैनल दूसरा मैंने देखा नहीं है, इतना बीच में रह के दोनों चीजों को रखने वाला। लेकिन फिर भी जब मैं देखता हूँ ना कि इतने कम आपके हाँ, चैनल के सब्सक्राइबर है, तो अजीब लगता है। मैं कुछ मुझे भी दो अजीब चार लगता है यार। चीजें अपने दोस्तों को बताओ, बोलो सब्सक्राइब करने को। इसलिए मैं दो चार चीजें अपनी तरफ से फीडबैक देना चाहूंगा कि हाँ, बताइए। मैं चाहता हूँ आप इस चीजों के ऊपर वीडियो बनाए, जैसे टाइप्स ऑफ थिंकिंग हो गए, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, और टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है, हमारे व्यूज क्या होते हैं, हमारे इमेजिनेशंस क्यों है, हम व्हाई वी आर इमेजिनेटिव, उसको कैसे बदला जाए, बिलीफ सिस्टम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर, सिर्फ 5 महीने के भीतर, मैंने जनवरी फरवरी तक कुछ भी नहीं था, मतलब पहले था मैं, लेकिन अचानक एक रेडिकली चेंज कह सकता हूँ, या एक फंडामेंटली चेंजेस मुझ में हुए सिर्फ 4-5 महीने के भीतर। अभी 5-6 महीने हो रहे हैं। फिर मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। पहले बुक्स के लिए था मेरा, लेकिन उतना नहीं पढ़ता था। जो वर्ल्ड के जितने भी फेमस बुक्स है वो ठीक है, पढ़ा करता, आप एक काम अभी कीजिए। जनरली पढ़ता हूँ। आप एक काम कीजिए, तो आप जब अगली हाँ बार आएंगे ना, तो एक क्लियर आर्ग्यूमेंट लेके आइए कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, उसके पॉइंट्स लिख हाँ के लाइए, और फिर हम उसको हाँ। सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन कर देंगे। और सर थोड़ी सी 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, एक पॉइंट वाइज, क्योंकि एक घंटे में वो टॉपिक खोजना थोड़ा मुश्किल मेरा होता है। दूसरा मैं चैनल सिर्फ है ना उसके लिए। ये चैनल लाइव चैनल है, दूसरा चैनल है नहीं, youtube.com/vimoh। फिर भी उतने अच्छे टॉपिक बहुत अच्छे है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, एक जिसे हम न्यूट्रल व्यू कहते हैं वो है। लेकिन फिर भी और भी हमें चाहिए कंटेंट, और भी चाहिए, और भी मैं बोल रहा हूँ से हम मधुसूदन, मेरे पास एक दूसरा चैनल है, उसका नाम है विमो। youtube.com/vimoh पे हाँ, देखा जाओगे, है मैंने वो। उस हाँ पे 10-10 मिनट के वीडियोस बहुत सारे हैं। एक और चैनल है हिंदी में, विमो एक्सप्लेन्स करके, youtube.com/vimoh explains, वहाँ पे भी हैं बहुत सारे वीडियो, उनको देख सकते हो।
ये नहीं, चैनल मैंने बहुत रेगुलर सारे है, वीडियो ये देखे लाइव हैं स्ट्रीम आपके, बहुत सारे अच्छा आपके बहुत सारे वीडियो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर अभी भी वीडियोस आने के, जैसे सोलप्सिज्म के ऊपर हो गया, इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर हाँ हो तो गया, बताओ ना टॉपिक्स, मुझे मुझे कमेंट्स में बताना किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं बना दूंगा अगर बना पाया तो। इफ आई एम क्रिटिकल थिंकिंग के क्वालिफाइड ऊपर हो गया, आई मेक इट। रैशनैलिटी को कैसे इंप्रूव करे, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव करे। तो थोड़ा सा एक यंग जनरेशन को एक अच्छा एक पुशअप ये मिल जाएगा, ट्रिगर मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं, क्योंकि सच में इतना बढ़िया व्यू है ना आपका, एक सेंट्रल, एक न्यूट्रलिस्ट व्यू है। थैंक यू तो मैं यही चाहता हूँ मधुसूदन, कि थैंक आपके यू। चैनल का और इम्प्रूव हो, दो इंक्रीज लोग हो और सब्सक्राइबर्स। दो लोग और इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको ले लूं। हाँ, जरूर जरूर सर। जी थैंक यू हाँ जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, गुड नाइट। धन्यवाद धन्यवाद। So that was Madhusudan. There is now Cinephile and Akash. After that, I will not be taking any people. Sorry, because that's already 1 hour 20 minutes. So anyone else who's left, please, you can leave and you can come back next episode. Cinephile, you're on screen. Hello. Hello. Thank you for waiting for Hi, such a long Vimoh. time. Man. No, I just came 15-20 minutes ago. Oh, okay. Yeah, I'm glad that you think 20 minutes is just 20 minutes. But okay, go on. First of all, thanks, man. कि ये सब you're talking about atheism and stuff. It feels very good कि कोई और भी atheism सबके बारे में बात कर रहा है and rationality के बारे में बात कर रहा है. So it feels really good क्योंकि आसपास भी जो लोग देखते हैं, जो लोग को देखता है उससे पहले ही दिमाग खराब होता है कि कौन से लोग घूम रहे आसपास में. I just wanted to, you just reminded me of something very important. You guys have been asking na कि Pranav should start a live streaming channel. He has started a live streaming channel. I'll just share the link to it in my chat so people can go subscribe to it. It is here called Pranav Radhakrishnan. मैंने chat में link डाल दिया है. This is where Pranav is going to do meme reactions and live streams, etc. So people can go and subscribe to it. हाँ, Cinephile, go on. बाय द वे, प्रणव के कारण ही मेरे को आपका चैनल के बारे में पता चला. Oh, okay. साइंस जो Nice. चैनल के थ्रू ही. Yeah. Nice. Go on. Do you have a question? लाइक मेरे को बात करना था कि जैसे कुछ जगह पे लोग को देखते हैं कि लोगों को माता आ गई ऐसा टाइप का बोलते हैं कि माता आ गई. तो मेरी भी एक रिलेटिव है, उनको लाइक कहीं भी किसी फंक्शन वगैरह में वो बैठे रहते हैं, जैसे कोई भी पूजा वगैरह. तो वो तो उनको लाइक उनके एक हस्बैंड है जो कि अभी नहीं है, तो वो उनके जैसे एक्ट करने लगती है. अच्छा. एंड लोग ऐसे सोचते भी हैं कि वो एक्चुअली में उनके अंदर उनका ही आत्मा आ गया है. एंड आई थिंक ये कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, बहुत खतरनाक. या ये इस प्रकार के जो सब रिलीजियस बिहेवियर्स हैं, इफ यू ट्रैक देम डाउन, इनवेरिएबली इन मोस्ट केसेस यू विल फाइंड कि ये आइदर स्प्लिट पर्सनालिटी या फिर सम काइंड ऑफ अदर मेंटल हेल्थ इशू, उसके साथ मेंटल हेल्थ इशू या कंडीशन उसके साथ इसका लेना देना होता है. और कई लोग, लाइक मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं नहीं जानता कि आपके रिश्तेदार का मोटिवेशन क्या है, बट आई थिंक इफ दिस इज हैपनिंग रिपीटेडली शी शुड बी टेकन टू सी अ प्रोफेशनल. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डीमेरिट्स ऑफ रिलीजन इज दैट ये सिंपल जवाब एक प्रोवाइड कर देता है जिसको पकड़कर लोग बैठ जाते हैं, और असल में जो कारण होता है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते क्योंकि वो फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे आ जाता है. सो या इट्स अ बैड थिंग. वही सो वही हमको जानना था कि आखिर हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि ये कोई आत्मा नहीं है, ये मेंटल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, खास करके इंडिया में जहाँ पर कि लोग मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली नहीं लेते. I wouldn't know how to talk to people because that seems like a question for a counselor. But I think अगर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ ये रेगुलरली हो रहा है, जिससे भी बात कर सकते हैं, जिससे भी बात करके उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले सकते हैं, लेने की कोशिश कीजिए.
एक बार वो हो गया ना, देन द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मे बी एबल टू बेटर एक्सप्लेन टू पीपल लाइक योर पेरेंट्स इशू क्या है, क्योंकि हो सकता है तुम समझा ना पाओ। तुमको ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के नेचुरल इनक्रेडुलिटी के साथ डील करना है, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो, वो तुमको चड्डी में देख चुके हैं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे शायद, राइट? पर एक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आके बोलेगा कि ये एक सीरियस हेल्थ इशू है, ये क्या बकवास कर रहे हो, तो हो सकता है वो सुन लें। तो कोशिश करो कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, उनको किसी एक्चुअल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद मिल सके। जिससे भी बात कर सकते हो उनके साथ बात करो और कोशिश करो कि ये हो जाए। एक बार ये हो गया ना तो तुमको नहीं करना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल संभाल लेगा। या ओके, सो आई ट्राई दैट। एंड मेरा एक और पॉइंट था कि जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्यूडो साइंस को खुद Hold ही on, hold on, hold on, पेडल hold करती on, hold on. There is a comment from Taranga, who is actually someone who is in the profession of counseling people. She said, "This is a mental health issue, but is not khatarnak unless there is self harm or harm to others." Is there? Like ये जो जिसकी नो बात तुम देर कर इज रहे नो थे? नो देर इज नो सेल्फ हार्म और लाइक दैट, बट Okay. बस वहाँ पे वैसे Hmm. एक्ट करती है जैसे। So self harm, I think Taranga ने जो point raise किया वो important चीज़ है. I would just like to add to this that like if someone is going through this, the harm may not be to them or those around them. But if the message going out among impressionable people is that this is some Atma coming, and then the next time to someone else this happens and they don't seek mental health, guidance, it may be khatarnak in their case. So the individual who to whom this is happening here may not be in danger, and people around them may not be in danger. But those who are looking at this may take away the wrong lessons from it unless a mental health professional is brought in. So that may be another kind of khatra that we need to keep in mind. हाँ, सिनेफाइल आपका दूसरा पॉइंट क्या था? या सो जैसे हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्यूडो साइंस खुद ही पेडल करती है। सो आयुर्वेदा सबको तो समझ में आता है क्योंकि उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, तो वो उसको पेडल करती है उसके बारे में। लेकिन ये जैसे होम्योपैथी का बुलशिट है, वो क्यों आखिर उसमें उसमें उनको क्या फायदा मिलता है, वो आखिर क्यों करती है? मुझे लगता है कई इंडियंस को लगता है कि होम्योपैथी इंडियन है। एक बार किसी ने होम्योपैथी के खिलाफ कुछ लिख दिया था, उसको 4 लोग गालियां दे रहे थे ट्विटर पे, "वो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा है।" उसने बोला, "अबे साले ये जर्मन है।" इसमें भारतीय संस्कृति का क्या लगता है अपमान लोगों हो को गया? खुद ही नहीं पता है कि इंडिया में क्या बने क्या नहीं बने। सो पता नहीं, होम्योपैथी के बारे में बहुत सारा एक्चुअल साइंटिफिक लिटरेचर है जो ये साबित करता है कि इट इज़ लिटिल मोर देन प्लेसिबो इफेक्ट। बट अगर कुछ लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट से मदद मिलती है तो मिल जाए, एटलीस्ट इट्स नॉट डैमेजिंग। डैमेजिंग सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है होम्योपैथी, और वो ये है कि सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम है and that problem is serious and they don't go actually seek modern medicinal help and just rely on homeopathy, in which case that problem will become bigger. मैं तो जब किसी को समझा नहीं पाता हूँ ना कि होम्योपैथी बकवास है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है लेते रहो होम्योपैथी, बट साथ ही साथ मेडिसिन भी लो। हाँ, और कुछ कुछ तो होम्योपैथी डॉक्टर्स कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे कि कुछ 1 साल पहले ही आई हैड गॉल ब्लैडर स्टोन। सो लाइक मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली बाकी जगह भी दिखा रहे थे, एंड मेरा ऑपरेशन थोड़े टाइम में होने ही वाला था, 2 महीने में। लेकिन वो लोग ऐसे ही लाइक ऐसे ही बस होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास भी जा रहे थे कि बिना ऑपरेशन ही कुछ हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन कभी भी अपने आप नहीं निकलता है, वो ऑपरेशन के थ्रू ही निकलता है। नहीं, बट कुछ वो लोग ऐसा होता होम्योपैथी है, डॉक्टर के पास गए। गॉल ब्लैडर स्टोन का मुझे पता नहीं, अगेन आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट और आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, बट अगर डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपका स्टोन किसी और तरीके से नहीं निकल सकता और सिर्फ ऑपरेशन से ही निकल सकता है, देन ऑब्वियसली द डॉक्टर मस्ट हैव बीन राइट। या जो भी सर्जन्स थे उन्होंने बोला कि वो खाली हाँ। ऑपरेशन से निकल सकता है, बट वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए तो वो ये उसमें भी बोल रहे कि ये ऐसे भी निकल जाएगा, हम तो कितने लोगों का निकाल चुके हैं, और That is दवाई भी where दे the देते हैं danger जबकि lies. कुछ नहीं हुआ उस दवाई। होम्योपैथी को, मेरा पॉइंट ये है कि होम्योपैथी को अपनी औकात समझनी चाहिए। होम्योपैथी को ये पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन नहीं है।
होम्योपैथी को ये पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल सिर्फ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, और अगर इससे ज़्यादा होम्योपैथी कुछ बनने की कोशिश करती है, देन इट इज़ जस्ट गेटिंग इन द वे ऑफ पीपल एक्चुअली फाइंडिंग हेल्दी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, लाइक एक्चुअल साइंटिफिक सॉल्यूशंस। कल परसों लाइक मेरे चैनल पे इंटरव्यू है डॉक्टर एबी फिलिप्स के साथ। एबी फिलिप्स ने आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनको धमकियाँ आई बहुत सारी, उनके ऊपर कोर्ट केस भी हुए। अभी रिसेंटली उनके खिलाफ जितने भी ये सब थे, उसको उनके मेडिकल प्रोफेशनल्स का कोई ग्रुप है, उसने रिजेक्ट कर दिया कि उनका क्रिटिसिज्म सही था। अगर आयुर्वेद एक चीज़ है या होम्योपैथी एक चीज़ है, और तुम साइंटिफिक टेस्ट्स को सबमिट करते हो और बोलते हो कि ये हमारा सॉल्यूशन है और ये प्रूव करता है कि हमारा सॉल्यूशन एक्टिव है, मतलब काम करता है, देन वंडरफुल। बट अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे मन से निकला हुआ है और उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, देन देयर इज नो रीजन टू टेक इट सीरियसली। आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फाइंड दैट इंटरव्यू। चैनल के मेन पेज पे इंटरव्यू सेक्शन पे जाना, डॉक्टर एबी फिलिप्स के साथ जो इंटरव्यू है उसको देखो, उसमें इसके बारे में बहुत ये वो इन्फॉर्मेशन देखा है। हुआ है मेरा एबी फिलिप्स के साथ। देखा था? ओके। Yeah. हम्म। And just बाय बोलने के ये बाद, बाय बोलने के पहले आई वुड लाइक टू तरंगा ने एक और पॉइंट बताया है, वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माता आई है वाला थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड एज खतरनाक, mental health issues or even coping mechanisms are not खतरनाक in themselves, others view of it is. Yeah. So अगर कोई किसी साइकाइट्रिक या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, कई बार वो ऐसे बिहेवियर्स डिस्प्ले करते हैं जो कि किसी और को लग सकता है कि आत्मा आई है, राइट? पर मे बी दैट इज जस्ट द ब्रेन प्रोसेसिंग दैट ट्रॉमा, and if that is happening, there is no risk in it. The bigger danger is if they are harming themselves or harming other people, or if certain other people look at it and come to the conclusion that आत्मा आत्मा सच होती है, मेरे घर में जिसको बीमारी है उसको भी आत्मा ही है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाऊंगा। सो दैट इज द रियल डेंजर देयर। एंड जस्ट वांटेड टू मेक लास्ट पॉइंट कि ये लोग रिलीजियस लोग बोलते रहते हैं कि किसी भी रिलीजन की फीलिंग सर्ट नहीं करनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट देम कि ये हर दिन हमारे फीलिंग सर्ट करते हैं बोल के कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। आई डोंट थिंक also want हमको to- इतना देखो ये जो सेंसिटिविटी है ना, मुझे लगता है कि ये रिलीजियस लोगों को शोभा देती है, हमें शोभा नहीं देती। गॉड कोई नहीं, आई वाज जस्ट किसी ने मेकिंग अ जोक, आई वाज जस्ट I मेकिंग अ get it, I जोक। get it. I understand even. I have made a video about this. मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि किसी ने हम तुमको गॉड ब्लेस बोल दिया, मतलब गॉड ब्लेस कैसे बोल दिया तूने मेरे को। हम वैसे नहीं होने चाहिए। दैट इज द पॉइंट। हाँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, बस Yeah. जोक जोक बोला है कि आई आल्सो वांट टू फाइल एन एफआईआर टू ऑल दीस थीव्स, ऑलमोस्ट 95% ऑफ इंडियन। हाँ, गुड लक विद दैट बाय द वे। तुम पुलिस स्टेशन पहुंचोगे, पता चलेगा पुलिस स्टेशन में देवी देवताओं की पूजा हो रही है। वो भी है। चलो ठीक है सिनेफाइल, आई वांट टू मूव ऑन टू द लास्ट कपल ऑफ पीपल। या ओके, थैंक्स। Thanks. Bye bye. So I told everyone to leave, but Chetan has not left. So I have Akash, and then I have Chetan, and then I will end it. Hold on. Akash, hi. Hey man, Hey. am I audible? Yes, you're audible. Okay, so I don't have any question or something like that. I just want to pass a comment on what Abhishek Jha have said about what is the future of about our country and our youth. Mm-hmm. Can I? Yeah. So the in my opinion, is that the all our religion and all these beliefs is mainly connected with our childhood memories on us, right? I mean, like Yeah. it's passed on by our father, mother, our relatives. So that is something which is very dear to us, right? So, and when you are becoming an atheist, you are actually you are questioning yourself, your own existence, right? I mean, normally for me personally, I was born in a Catholic family. So before I was becoming an atheist, or during the process, I'm questioning all the beliefs, all my existence. I mean, for 18, 20 years, which I was living. So I was questioning everything. So it was a very difficult task, and it can't be done by everybody, right? And our surroundings also, right? I mean, we believe in a story. We believe in some theory or theology. I mean, like, see, I just have Googled and I seen that the Hellenic religion, right? The Poseidon, Yeah, Zeus, the Greeks. Greeks. I have seen, I don't know whether it's right or wrong.
there are still 2,000 to 10,000 people who are practicing that religion. I mean, come on, man. I mean, if you're saying that today that the religion is very relevant and their gods are, No. I I think mean, I think around the mid 80s there was a revival in Europe of some religions known as yes, neo-pagan yeah, religions. That's yeah, what is known as Hellenic religions right now. The okay, actual ancient Hellenic tradition is completely lost, yeah, and a it's lot of lost, crap but is also happening under the neo-pagan yeah, traditions right now. Yeah, yeah. But still, I think they're still following this. I mean, the gods like Zeus, Poseidon, and all, right? I mean, yeah, nature worshippers yeah, they are. nature Yeah. worship is there. Hmm. But if you're saying that thing in our podcast, I mean, how many of them will believe that? Oh, that's a bullshit. I mean, that role will apply in that religion, but when it's coming to our religion, it is not. We are not ready to apply. And I will tell you one thing, and I can't blame this kind of thinking method to even parties like BJP or any other kind of things, because Hmm. we as a people are asking. I mean, BJP is not doing anything special. They are Hmm. just activating whatever we are believing. I mean, we are already believing something which is not existing. They are just Yeah. using that. Yeah. And whenever there is a vote bank, they will change their opinion. And I will tell you one small development. You know JP Nanda, the General Secretary of BJP, right? I mean Yeah. JP Nanda, Yeah. right? I think around 1 month back he came to Kerala. You know what he Hmm. said? What? We should get, and we should. I mean, he asked to the BJP people to go and ask vote to. I mean, get up, go and ask votes to people who are in Christian community. Of course, Can you there are speak lots of. Akash, when your voice goes down, it goes really down. Can you speak a little louder? Yeah. Yeah. So what? Yeah. So what he said is that we should outreach to people in Christian community, because there are lots of fear among love jihad and all that thing among Christian community. Hmm. And the most interesting thing is that he's asking to the BJP people to outreach to atheists also. I mean, can you believe that? I mean, Yeah. he's asking I mean, the motive is that because atheists are criticizing everybody. I mean, Hmm. Muslims, Hindus, everything, communism, whatever bullshit. Atheists are, I mean, Essence Global especially, Hmm. homeopathy, Ayurveda, everything. So lots of ex-Muslims are coming out from the, are becoming. I mean, there are a lot of people are coming out from Muslim community. Hmm. So they want the vote of atheists now. I mean, BJP is not very strong in Kerala. Uh, Hmm. I mean, at least yes, they have a percentage, but it is very scattered. Yeah. So, I mean, if you are telling this to a person from Uttar Pradesh or from North India, I mean, BJP won't do that. But because Hmm. there is a critical mass which is happening, I mean, day by day, little by little, the number of atheists are becoming, it is increasing in Kerala, little by little, by the Hmm. efforts of Essence Global at all. Hmm. Hmm. So they want that vote back. So they are ready to, I mean, compromise their There's ideology, there's another thing that is Hindutva. also happening, right? The Hindutva side is kind of trying to appropriate the ex-Muslim movement. So a lot of Yeah, I Indian ex-Muslim channels are actually Hindutva channels. see. They're being Yeah, paid for and fed by the Hindutva side. see, yeah, that is also happening. But there is one more thing is that, see, because uh, there is an attack for ex-Muslims from both the right wing and the left wing. Left wing they are attacking because Yeah. I agree. Yeah. yeah, Yeah. you got the point, right? I mean, Yeah. everybody Yeah. have their Yeah. own interest. So Yeah. we can't say every ex-Muslims are, but definitely there is Hmm. agendas are there. Hmm. They are not. So, and one more thing, I said about Essence Global, right? I mean, man, after that Yep. program, 2nd October, it has pissed off lot of people. I mean, you can see back-to-back Hold interviews. on, Akash. Akash, Yeah, hold on. yeah, So that link I shared was only for Taranga. Nobody else joined through it, please. I don't have time to take more callers. Akash ke baad I will take Chetan, and if Taranga comes, I'll take her. After that, I like aaj ka ho gaya, kota khatam. Akash, go on. yeah. So I just want to say that it has pissed off lot of people. I mean, Hmm. channels are doing back-to-back uh, interviews and all against Essence Global and all. It is Hmm. coming from religious people, Hmm. communist, left, Hmm. right, because we are Yeah, criticizing everybody. that was expected, no? Yeah, and expected. That's why I meant. It was a very good What is event. the I mean, criticism around from the left? Like, what is the left's criticism point? left is saying that we are Sangh Parivar.
and we are Okay. criticizing Muslims. Huh. And Sangha Parivar people are saying we You're are anti-Hindu. we are jihadist. So Anti-Hindu jihadist. Wonderful. yeah, you both are saying the opposite thing. I mean, we criticize everybody, regardless Yeah. whoever you are. I mean, everything is in a way. We You know know, that. my biggest problem is I have no idea what was actually in the event because most of it was in Malayalam. So it was if it was an English Yeah, event, I could go through some videos and make some interesting content on the basis of it. But I can't yeah, because most of it was in Malayalam. I yeah. hope But the next time it I happens, there is English stuff on it. no, I think the videos are coming out with English subtitles. That's why it's taking some time Acha, acha, acha. to Okay, release. So they, cool. I think they are preparing. I mean, maybe if you ask to Pranav or something like that, you will get accurate information. Hmm. So this is happening. They are calling us jihadists. Other people are calling us Sangh Parivar, Sanghi, Okay. Hindutavadi. Okay. Akash, do you Yeah, have that's another all. point to Yeah. add? I want to move on to the Nothing, nothing, last nothing. caller. Thank you, man. Cool, Yeah. cool. Good night. Thank you. Bye bye. Yeah. Next and finally is Chetan. Hi, Chetan. Hi, Vimoh. Heads. Am I audible? Yep. I don't know why I Okay. said heads. Okay. Actually, from 2 weeks onwards, my mom health is very unstable, Okay. and I 2 weeks ago she consulted a doctor, and the doctor said nothing is wrong, and she came to home. But even after the doctor's consultancy, something is wrong with my mom, and she is saying that actually my mom went through a lot of mental torture from her relatives. I don't want to get into details, Details. Okay. but the thing is, she is claiming that those relatives are doing some black magic on me. That's why I am getting sick. Even doctor is unable to know the reason. And myself an atheist, even mom knows it. But it's a typical Christian family, so she forced me to believe in God. I don't know Is how your mother strong. actually in like real bad health? No, it's not too bad, but it is slightly deteriorating, not in a normal way. See, so here's the thing. I cannot ask you what she's going through, and I cannot help also with the medical stuff. All I can Uh, say is that you should probably take her to the doctor as much as possible and Okay, see okay. what That is problem happening. is the problem I want to talk about with you is when I try to bring the doctor, let's go to doctor, then she is quietly ignoring that this is Hmm. definitely the black magic done by my relative. So there is no chance that yeah, it can be cured by modern medicine. How could I convince man? You don't have to take her to the doctor. The doctor will do the convincing, right? But the thing is, first she is not taking the step to go to doctor. I am regularly asking her, let's just go to doctor, but she is not agreeing and being cooperative. Maybe you can speak to a doctor. Maybe you can speak to a doctor and ask them to come home and check and see what happens. Is that possible? Maybe, yeah, I think I should try this. Yeah, maybe that will work. If it is possible, maybe it is not possible. If it is not possible, you should seek help from some other member of the family also. Maybe they will be able to convince her. Okay, okay, okay. I will Yeah, try my level best. great. Okay, okay. One Thanks, more Chetan. question. Oh, Oh, just okay. slicing a small question that Okay. actually I was having an argument with one of my friend. One of my friend is atheist and she blindly believes in religion, but she is like slightly rational views on religion, Hmm. and I mostly say to that religion has some good things, but the good things are very small when compared to the bad things it does to the society. So Hmm. there is no point in following the religion. There is more harm that happens than good by following the religion. And as an example, I given that if you follow Hinduism, you unwantedly become uh, is a part of enemy to the Muslim. Not in every Hindu. I'm not saying to every Hindu, but there are some people who are born in extremist families of Hindus who Hmm. unwantedly develops an mindset where eventually when they grow up they develop hate towards Islam and other religions. No?
Okay, And Chetan, what is this the question? What is the question? Okay, I think I'm going too far. The question is, she's given an analogy that there is a quality in human beings that jealousy. Jealousy is doing some amount of good to us. Why? Because if you feel jealous about others, we may take it positively I and got it. Got it. uh, She's saying that jealousy has some positive, uh, results. What is she trying to prove with that argument? even the same way, even though religion is not completely good, but it will definitely have some positive output. So we should follow it. We should not leave it. Yeah, but we should be selective about what you follow, right? Yeah, Just that's because, sure, what. religion can bring some people hope, etc., but that does not Mm. mean every single thing that religion brings is a good thing. If religion Yeah, is doing visible damage, then that aspect at least can be condemned, right? yeah, that's Right? what That I'm is the trying to point. say. But she's blindly, this is blindly rejecting it. Okay, she's your friend, man. I don't know her, and I Mm-hmm. therefore cannot, comment very effectively about what is the best approach to convince her. But the Mm. problem with her argument is what I just pointed out. Mm. Okay, bro. Thanks, bro. Yeah, yeah. Chalo, bye bye. Bye bye. That was Chetan, and lastly but not leastly, there is Taranga. Hi, Taranga. Hi, not leastly. Oh, definitely least. I just thought that, I mean, what Vikash said and Cinephile said, and just Hmm. now Chetan said, right? Hmm. Hmm. For me, there was a common thread through it, Hmm. which was that, that there is there's such a fixation on fixing people and things and situations, right? Hmm. And Hmm. I just like, even from the comments, right, and in general following your this live stream, and everyone who, everybody who follows you in general, and the tone or the direction of conversation, Hmm. I just wanted to say that I feel like people, all of us, need to make a distinction between being atheist, being rationalist, and being ethical. Yeah. Yeah, I So was going to in say that, being dicks. Yeah, yeah, well, yeah, okay, yeah, yeah, I'm yeah, not yeah. saying that, but yeah, like being ethical. So for me, like, I just wanted to say to Vikash and to Cinephile and to Chetan just now, right, that the Hmm. problem for Vikash, the problem is not you. Aap nahi ho problem, right? Hmm. And similarly for Cinephile and for Chetan, who spoke just now, आपके वो आंटी या वो आपकी मम्मी, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम एथिकल फ्रेमवर्क से हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज को भी ना, हम एथीस्ट हो सकते हैं, मैं नहीं हूं, बट हम Hmm. एथीस्ट हो सकते हैं, हम खुद को रैशनलिस्ट समझ सकते हैं, लेकिन Hmm. हमारा प्रोसेस जो है ना, हमारा थिंकिंग का, कोई अभी बोल रहा था ना बार बार आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, से मोर अबाउट, मेक मोर हाँ, वीडियोस ऑन हाँ. critical thinking and analysis. For me, critical thinking and analysis comes from the position of not so much rationality as rationality based on an ethical framework. ठीक है, कि Hmm. बाकी लोग किसी को फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर अदर पीपल, आई एम ट्रांसलेटिंग, आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई एम ट्रांसलेटिंग बिकॉज देर आर नॉन हिंदी स्पीकर्स ऑब्वियसली who Hmm. come as scholars also and in the live, Hmm. that it's not, we are not fixating, we are not trying to tie our rationality with that. So when we are saying how do I get my mother to think this, or how do I get, I will say, I just wanted to add to what you were saying on the question of mental health, like getting help and showing to a doctor, etc., that you can't just leave it to a doctor to take care of things. Okay, let's be very clear about that. I wanted to Hmm. add that the people who need help are Hmm. those who are thinking that that person who is neither committing self harm nor harming others, that person needs help, right? So I Hmm. would say that the first place, like, Cinephile, for example, don't, please, like, I'm not taking, don't take this as an individual thing, I'm not saying this only to you personally. I would say that पेरेंट्स और एनीवन एल्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है आपके आंटी के बिहेवियर से, ओके, Hmm. उनको पहले थेरेपिस्ट की से बात करनी चाहिए, या प्रोफेशनल से. मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी, दैट अगर चेतन, आपकी मम्मी डॉक्टर, दिस इज हर कोपिंग मैकेनिज्म, राइट? उनको Hmm. लग रहा है कि इट हेल्प्स हर टू बिलीव दैट
कोई और कुछ और कर रहा है और दे आर विशिंग हर बैड, जादू टोना हो ना हो, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ये मर्फी का लॉ है या मेरी किस्मत ही खराब है, इन लेस वॉट एवर इरेशनल वेज, दैट इज ओके, यू नो, यू सेट योर, तो मैं विकास से यही बोलना चाहती थी, आप खुद का एथिकल फ्रेमवर्क सेट कीजिए ना। अगर कोई इंसान फिट नहीं हो रहा है, ओके, जनरल सोसाइटल मोड्स में, जनरल सोसाइटल, इफ somebody is not fitting into general societal you know what is considered good social interaction or you know functional social interaction, just check, I would only say check whether the ethical framework is met there or not. If they're not harming themselves and not harming anywhere else, anyone Taranga, else, yeah, then just don't, like, yeah. See, my point was, I don't know, like, all I know is that someone is behaving in a fashion that seems to be the result of some kind of mental issue or mental condition. Yeah. I don't know if it is because of trauma. I don't know if it is going to be harmful to her. I don't know if it is going to be harmful to those around her. The only Correct. person who can come to any conclusion about whether or not she should be treated or advised is a mental health professional, right? Absolutely agree. Yeah. But then you can figure that out by talking I to a agree mental with health you when you professional say, yourself. Is I the agree point with you I'm when you making. say that Yeah, people yeah. just look at an aberrant behavior and think that this person needs to be fixed. Ah, Maybe they correct. don't need And to be you may fixed. Maybe they're just going through something that is healing them. So that is completely absolutely something I agree with. Yeah. correct. And also that I just wanted to add, it was just adding to what you were saying, that the problem I that got that. somebody asked I in got chat, that. that what do you mean by perception? My only concern is, see, a mental health professional in a good helpline or a good service will tell you what you can do to interact with that person and help them bring you till them, right, till the mental health professional. But Yeah. often we think that we can bypass that step. You can't bypass that step of being ethical in your interactions with someone who is in pain. That was the point I was trying to make. And Yeah. which is why I'm saying again and again that don't assume that because you're an atheist, therefore you're a rationalist, therefore you're ethical. That is not true, That you is not know. how things That work. There are also. plenty of Yeah, atheists absolutely. who are either just plain bad people or Yeah. clueless about what good or bad means, and therefore they just put Yeah. themselves on a pedestal. Ki you're Yeah. religious, you don't know what is good for you. I'm an atheist, I Yeah. know better, so I Yeah. will Yeah. decide what should happen to you. I don't think Yeah. we should do that. I have spoken about this Okay, before also. Yeah. you're right. And they're not questioning their own extreme functionalism. You know, they Yeah. believe in a very functionalist, ableist, you know, productive, which is, you know, yeah. So Yeah. that's all I just very quickly wanted to say. For the So yeah. record, for everyone who's listening, Taranga is not Yeah. saying that any of the people who are doing who were calling today were these people. She's saying this is something we should all be aware of and use as a filter. कि maybe I'm not Taranga का connection कट गया लगता है, but if you called in with these issues, before you look at someone and decide that they need to be fixed, do some self filtering and wonder, does this person need filtering? Or does this person not need filtering, and I'm kind of overreaching through my rational outlook and trying to fix something that can do without fixing, because that person may simply be using their seemingly strange seeming mental health issue to heal from a trauma. There is an episode of Star Trek where a spaceship blows up and there is one child which survives. The child is brought onto the Enterprise, and that child is in trauma. The child has lost everyone, and that child looks at Data, who's an android, and starts acting like a robot, because the child realizes that Data has no emotions. The child has no way to process its own emotions, so the child starts acting like a being with no emotions. They take it to the ship's psychiatrist, the counselor, and she says, let him do it. Different people deal with their trauma in different ways. Wait, I'll show you what I'll show you. What was it called? Maybe if you watch this episode, this will make nope. Star Trek TNG Data Boy Hero Worship. Yes, the episode is called Hero Worship, and it is. I'll tell you season and episode number also. Yeah, this is
11th episode of season 5. So go to Netflix. Star Trek The Next Generation is the series. Season 5, episode 11 is called Hero Worship. Watch it. Sometimes people will engage in behavior that seems strange, but they're healing in their own way. We should not look at these people and every time come to the conclusion that, oh my God, they're behaving in a way that is not normal and we should therefore fix them. That is what Taranga was saying. And if I understood her correctly. So this is something that you should keep in mind. Also, we have an entire episode where we discuss mental health, personal matters, and political matters and how they relate to each other on this podcast, to which I will also share a link here. It is the personal, the political, and mental health. Let me just share a link to that in the chat. The personal, the political, and mental health. There's the link. I have shared it in the chat. I would recommend everyone watch it. Taranga is on it and Ayman is also on it, and they are both professionals. They do this for a living, as opposed to me, who's just a random guy, random wise ass sitting on an internet YouTube channel and talking about random shit. So take this seriously. Anyway. So yeah, that Star Trek episode, definitely watch it, and we can talk about it in the next episode. And we are now out of callers, so what I will do is that I will try to end this episode as calmly. If you want to support this channel, you can support it by clicking the join button below and becoming a member of it. Your support helps me buy books, buy software, and pay my bills. I'm a full-time content creator and all my work is sponsored by people like you. If you want to support this channel through Patreon, you can do so at patreon.com/Vimoh, VIMOH. If you want to make a one-time donation instead of a monthly or an annual commitment, you can do so at my blog, vimoh.stck.me. There is a support button that you can click and pay any amount of your choice, one time, no monthly thing. You can also send me money through UPI at Vimoh@UPI. Simple handle, Vimoh@UPI. In addition, if you want to buy, ये हमेशा भूल जाता हूँ मैं. We have merch. If you want to buy a t-shirt, hoodies, and mugs, you can do so at kadakmerch.com/VimohLive. It's my store. If you go to the main page of this channel, you will find a tab called store. You can click on that also and it will take you to the same store. kadakmerch.com/VimohLive. There's a t-shirt there called Sabka Malik Fake Hai, and another one called Words Are Weapons, and another one called Woke Sabha is in session. So choose and let's see if you find something that you like. If you like listening to audio episodes of this podcast, you can do that at www.vimoh.in. The audio episodes are available on this website, along with links to all the audio apps where you can find this podcast, including Spotify, Google Podcast, Ghana.com, Apple Podcast, JioSaavn. Again, the order is going for a toss. I don't know why. But yeah, that's it. My main YouTube channel is youtube.com/Vimoh. I mostly publish shorts there these days. You can check it out also if you want to. And with that, we come to the end of this episode. Let me... Right. Right. So that's it for this episode. I hope that I will see you all next week. I mean, this week on Saturday at 9:30 p.m. on this channel. Until then, I hope you have a great rest of the week and be safe and all your loved ones are okay. Thank you. Good night.